Hi everyone, good afternoon. I hope I'm audible. I hope I'm visible. Kindly confirm the audio and video. Everyone who's listening to me, kindly confirm the audio and video. So good afternoon to all. I can see some doubts being asked. So let us see कितने लोग regular आ रहे हैं, कौन नहीं आ रहे हैं. जल्दी से everyone, I'll have a look at what is happening and you can ask your doubts also. Audio video fine, okay. So Cenozoic succession, you dictated 3 events of great geological importance. Can't we write fourth faulting of the western flank? ठीक है, उसमें डाल सकते हैं, Cenozoic में ही डालेंगे, no problem. Good afternoon, good afternoon. Good afternoon to all. Some network issue. I watch all your recorded. Okay, Ratnam, I was missing you. ठीक है, recording में चल रहा है. Okay, so let's look at the doubts. Rakesh has a doubt. Let us first write. मन में देखते हैं क्या है. पहले उसको सिर्फ स्क्रीन पे लिया मैंने. Sir, a non-geography doubt. Will you take or have already taken a session on how to approach essay writing? essay writing के लिए एक already मेरा एक वीडियो है YouTube पर, वो मैंने दिया हुआ है. मनीषा का एक डाउट है. Let us pick this up the way it is. Okay. Sneha has a doubt. Let's pick up this also. Just a minute, let me see what is this. पहले देख चले. अगर ये होमवर्क है तो कुछ अपलोड नहीं करना है. I just wanted any doubts. अपने डाउट के लिए किया है तो आप देख लो आपने क्यों किया है, बट आई एम लुकिंग ओनली एट दिस. ठीक है. सो ऐसे के लिए सर डू वी हैव टू अपलोड होमवर्क? नो, यू डोंट हैव टू अपलोड दिस. ये क्या चाहिए? डिफरेंस है. ये डिफरेंस मुझे नहीं चाहिए था. डिफरेंस से तो हमें स्टार्ट करना है. 7 पॉइंट्स मैंने कहा था ढूंढ के लाने आप. ठीक है, डोंट वरी, वी विल डिस्कस ऑल ऑफ देम इन द क्लास. सो आई डोंट सी एनी पर्टिकुलर डाउट है तो पूछिए. सिर्फ होमवर्क नहीं अपलोड करिए. होमवर्क के लिए नहीं है अभी. इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज आस्क. Shall let us look at this doubt. Valid doubt. Let me answer this. Just a minute. Perfect. So this is one official doubt that I have. So everyone, do you remember this? Quickly. 1, 2. Yes. This is Sivalix. Get it? So there is a tendency. When we're talking about, this was a question, no? Western Himalaya and Eastern Himalaya. Do we get that? There is a tendency of all the ranges to fuse and merge together. Is everyone okay? Tendency of the ranges to fuse and merge together. So they become one. तो ये कह रहा है यहाँ पर कि the Shivaliks are known by different names in different. They are called Jammu Hills and Dafla Miri Abor Mishmi in Arunachal Pradesh, Dhang Range, Dundwa Range in Uttarakhand, Churiya Ghat Hills in Nepal also form the Shivalik range. So what we are talking about is here around Jammu. Now when we are talking about Jammu, तो आप देखेंगे जम्मू तक तो खत्म हो चुका है Shivaliks. जैसे मिडिल हिमालय, पीर पंजाल, yes, पीर पंजाल के बाद जो भी एरिया है that is there, तो उसको उन्होंने जम्मू कह दिया. ठीक है. Then they call it Dhang and Dundwa in Uttarakhand, Dhang and Dundwa, and they called it Churiya Ghat in Nepal. Get it?
Here, when we are talking of Dafla, Miri, Abor, Mishmi, they all are fused into one. They all are fused into one. So calling them as Shivaliks may not be the right one. So that is there. But since the book has written, so I don't want you to be confused. But yes, I would definitely want to make another diagram which will make things clear for you. Everyone, please pay attention. इसी doubt को ध्यान में रखते हुए, keeping in mind this doubt. This is Himadri, inner Himalaya. What is the average height? 6,000 meters. Remember that? Kapil, I'll just take that first. Everyone, please stop writing. First, take this. Why is the tendency that what drives this tendency? Is it the horizontal compression? तो आपने कुछ पढ़ा हो तो उस पर हम करेंगे. But first, have a look at this. इस पे भी हम बात कर चुके. तो inner Himalaya. Inner Himalaya, अगर उसका देखा जाए, if I look at inner Himalaya, characteristic of inner Himalaya is that they are high, they are snow covered. They are high, they are snow covered. Do we get that? So they will not have forests. They will not have forests. The peaks and everything will be very, very high because the temperature is so cold. The temperature is so cold in here that the forest cannot survive. Do we get that? Forestry, vegetal matter, बहुत मुश्किल होता है. So mostly it will be ice caps or tundra. Forest आएगा कहीं पर थोड़ा नीचे आए, थोड़ा नीचे आ सकता है. Yes. Leland is saying is tundra possible? So I'm saying the same thing. Ice cap and tundra are possible. That too when it thaws, not otherwise. Do we get that? So what is the characteristic? The very characteristic trait here is height, majestic height. And second is continuous. Continuous. Is everyone okay? They are very, very high. They are very difficult to cross. They are very difficult to cross until and unless there is some natural. Can you see what is this? This is क्या होगा ये? What would this be? So this would be a pass. Maybe a river is cutting through it. That is why there is a gap so human beings get a chance to cross it. Otherwise, they are very difficult. So did we get the characteristic of this? Let me come to the next range. Let me come to the next range. Next range is this. What is this? This is Middle Himalaya or Himachal. This is not as high. This is not as high. And we will find that the rivers are able to come out of it. Do we get that? Rivers पीछे से भी आएंगे, कुछ यहाँ पर भी होगा. Some places it might also have snow. Some of the peaks it might have snow. But here you will find ये पूरा ice वाला ज़्यादा है. Are you getting the difference between them? Inner Himalaya. And I would say that this is one area where human habitation has been there because यहाँ पर trees, forest काफी मिल जाएगा. You will find vegetation in here. So human beings have gone, chopped it off, lived over there. Is everyone okay? So if you ask me, the characteristic is scenic beauty. If you ask me, most of the hill stations are in Middle Himalayas. Manali, yes, Kullu, Jammu, Kashmir. Kashmir तो और ऊपर चला गया. Kashmir is in between that. Yes. अच्छा, in between these two, there are gap आएगा. Everyone between A and B there is gap. So बीच में valley आती है. There will be a valley in between. Will there be a valley in between? Two very famous valleys in between where human beings have settled. One is the Valley of Kashmir. Valley of Kashmir. Other is the Valley of Kathmandu. Do you get that? Kashmir Kathmandu Valley. Is it giving you clarity? Where are they located? Middle Himalaya. You can reach them. इसमें गैप्स आप भी बना सकते हैं. यूसी ट्रांसपोर्ट के लिए भी बना. Everything we are talking of tunnel also. अटल टनल बना दिया हमने, ये कर दिया. तो scenic beauty that is there. Is everyone okay? Now everyone please pay attention. उसके ऊपर Trans Himalaya we are not talking about. After this Indian plate, and remember these two have come up because of upthrusting. After this, what was it? It was the four deep. After this was the four deep. Is everyone okay? After this was the four deep, but the force was still coming. So as a result, the sediments rose up. Remember 900 to 1200 meters. This is the third one. So the four deep sediments got folded. Four deep sediments which were coming from the rivers got folded. Do we get the chronology also? Whatever I've talked of, every day I give you new ways of looking at it. Okay? The rivers which were flowing, will they get blocked temporarily? Either block हो गया, उसके पीछे will it get blocked? Yes or no? River will get blocked behind this. So what will the water do? Water will find a way to come out. So water found a way and it came out like this. Possible? So they are still coming out. And what will these rivers do? They will create the plains. Remember, four deep is getting filled up. What is this? This is Shivaliks. This is Shivaliks. Do we get that, everyone? Is Shivaliks okay? What is the trait of Shivaliks? Can I say Shivaliks are discontinuous? They are low. They are sedimentary. Latest, or can I say youngest? Continuous, there are gaps. You can reach over there, sir, amongst Trans, Inner and Middle Himalaya, where dams are located. Dams are located wherever it is possible.
wherever it is possible, उधर है ना. अब होने को we are talking about there are dams in Indus, dams on Indus. If we are talking of dam on Indus, then where does Indus lie? Between Trans Himalaya and Middle Himalaya. Yes or no? No, sorry, Trans Himalaya and Inner Himalaya. Your river enters, Satluj enters India, cuts through main Himalayas. There we have. So तो हमारे ऊपर हमने कहाँ पे लिया? हमें चाहिए potential energy. We require potential energy some height. So Bhakra Nangal, where Nangal enters, the river Satluj enters the plain after that. So Shivaliks पर हो गया. Yes or no? Bhakra Nangal is around Shivaliks. Get that? But if you go towards Shipkila, where river Satluj is entering, there you are hitting the main Himalayas, Inner Himalayas. Is everyone with me on this? Are we clear on this? So that's what I'm saying, that we cannot say कि सर कौन से हिमालय पे होगा, जहां पर बन सकता है, हमें हाइट मिल रहा है, we are using that. Is everyone clear on this? ऐसा मैकेनिकल क्वेश्चन पूछ रहे हो, थोड़ा सा उसमें विजुअलाइजेशन में डालो, थोड़ा थिंकिंग करो, एंड देन इट विल हैपन. नीरज says I came across a doubt. नीरज, जो तो हमने कल ही कहा था, कल तुम किताब पढ़ोगे और तुम किताब छापोगे. In figure you told that MCT is the boundary between Trans and Inner Himalaya. Diagram we have drawn it, Trans, Inner and then MCT. I am unable to visualize this part. मैंने कहा ना, ये कल तो डायग्राम बना दिया था, दोबारा तो बनाना मुश्किल है ना. मैं विजुअलाइज नहीं कर पा रहा हूँ. मैंने बना के दिया था, अब ये मजे में विजुअलाइज नहीं कर पाए. तो मैंने कल भी कहा था नीरज, आप नहीं विजुअलाइज करेंगे तो मैं सरप्राइज हुई नहीं. ये ट्रांस हिमालय था, फिर ये इनर हिमालय था, यहाँ पर एमसीटी था, फिर मिडिल हिमालय था, एमबीएफ था, देन शिवालिक, एचएफएफ. ये लिख दिया ना. एवरीवन कैन वी सी नॉर्थ टू साउथ? डिड आई राइट दिस आल्सो? सर विजुअलाइज नहीं कर पा रहा हूँ, लिख के दिया था, फैक्ट है. सर योर नेम इज सचिन, दैट्स ओके, बट मैं विजुअलाइज नहीं कर पा रहा हूँ. क्या विजुअलाइज करना चाहते हो? एस के बाद ए के बाद नॉर्थ टू साउथ, यंग, वो सब कुछ लिखा, एवरीथिंग वी रोट. मैंने कहा ना, इसी ने पूछा था कि सर खुल्लर पढ़ लूं. मैंने कहा पढ़ तो लो भाई, विजुअलाइज करने में बड़ी दिक्कत होगी. स्टोरी पे खत्म किया था नीरज, उसी लिए स्टोरी सुनाई थी. यू आर जस्ट कंपेयरिंग द फिगर. क्यों कंपेयर कर रहे हो? वो तो फॉल्ट लाइन तो दिख नहीं रहा ना, फॉल्ट तो नीचे है. एवरीवन, फॉल्ट इज देयर. अभी फॉल्ट कहां है? एवरीवन, डू वी हैव टू ट्रांस हिमालय? एम आई शोइंग यू इन द संगपो सुचर जोन? एम आई नॉट शोइंग यू द पीक्स? विजुअलाइज करना. विजुअलाइज वो करते हो जो दिखती है ना सपने में, आंख बंद करके, तो फैंटेसाइज कहते हैं. दैट इज फैंटेसाइज. डोंट फैंटेसाइज जॉब, डोंट फैंटेसाइज. ये सामने की पिक्चर है, फॉल्ट तो नीचे होगा ना. फॉल्ट इज डीप डाउन जियोलॉजी. ये तो आपको बता रहे हैं, ये बिल्कुल वहां पे बैठा है, ये अपनी लाइनें बना के बैठा है. अब इसमें एमसीटी कहां होगा? फैंटेसाइज मत करो. आपको बता रहे हैं कि व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ दिस थिंग. सो दिस रेंज इज अ कंटीन्यूअस रेंज, डिफिकल्ट टू क्रॉस. नया डायग्राम बना रहे हैं. सर मैं विजुअलाइज नहीं कर रहा. अब हम जमीन के ऊपर आ गए हैं. वी आर नॉट इन जियोलॉजी. दैट लाइन व्हिच आई मेड, दैट वाज जियोलॉजी. Now this is physiography. I am telling you, when they will ask us structure and relief, so you will say that inner Himalayas are known for their height and continuity. It is very difficult to cross them. There are certain natural gaps. तो हम ऊपर की बात करें, नीचे जा रहा हो, विजुअलाइज करना. फैंटेसाइज मत करो. डोंट फैंटेसाइज. जस्ट बिकॉज़ द टीचर गिव्स यू ऑल द अपॉर्चुनिटी टू आस्क एनी क्वेश्चन, फैंटेसाइज मत करो. थोड़ा पढ़े लिखे का परिचय दो. एवरीवन, आर वी अंडरस्टैंडिंग? ये क्या हो रहा है? नॉर्थ टू साउथ रेंजेस आ रही. दिस इज हाउ Himalayas will look. Those fault lines are deep inside. That's geology. Those thrust lines are geology. Now when the water got blocked, उस water का जो valleys बने, and later on that water got drained also, these are called Ds. What is D? D is for dune. Dunes. NCERT भी बताती dunes. The valleys which were created in between. इसलिए कह रहा हूँ, पहले NCERT कर लो, जितना जानते हो वो करो. बेकार में मुझे मत impress करो. सर खुला पढ़ लूं क्या? मत करो impress भाई. पहला ये simple वाला तो कर लो. Looking at your notes and submissions, I get to know भाई कौन कहाँ पर है. ठीक है, ये एनसीईआरटी से किसी ने मार्क किया था, दैट्स व्हाई आई शोड इट. एवरीवन ओके विद दिस? चलिए आगे बढ़ते हैं. सो दीस वैलीज आर डून्स. सो डून्स लाई वेयर in between middle and Shivaliks. Those Kashmir Valley and Kathmandu valleys, where do they lie? They lie in between inner and middle Himalayas. ठीक है. अब इन वैलीज के नीचे, beneath these valleys we might have MCT, MBF. वो कहाँ होगा? वो तो नीचे, नो, जियोलॉजी में चला गया. But these valleys are there. So Dehradun, Patli Dun, Kotli Dun, have you heard or not? Now one interesting thing, I told you that all this is visible mostly on the western side. Eastern side में they are not that visible conspicuously. That is why I am explaining this. That is why I made this picture for everyone in the class. Is everyone okay? Now why did this happen? So this was one of the differences. So now let us look at differences between Western Himalaya and Eastern Himalaya. Number one, Western Himalaya are younger. First strike, are they younger? Obviously this will be what? Created later. अच्छा, younger मैंने लिखा है, my mistake, older. Western Himalayas are older. Is everyone okay? Number two, Western Himalayas are wider. All ranges
distinctly visible. Why so? Why so? Everyone, think about this. This is the door. When the door, this is hitting, and then the door closes like this. This hits, and the door closes like this. So can I say initially the tension is here, but as I am going here, does this open up and the tension shifts on this side? Yes or no? So इधर की tension कम हो गई, उधर ज्यादा हो गया. Do we get that? ठीक है. तो पहला ये था, और उसके बाद वो स्क्वीज होते गए, एंड दैट इज लेफ्ट. और आप यूं समझ लीजिए थोड़ा सा सेडिमेंट्स था. 33 का तो थोड़ा ही सेडिमेंट्स था ना. 33 तो यहीं पे खत्म हो गया. ओनली दिस पार्ट वाज 33. कैन आई से माय हैंड वाज 33? सो 33 गॉट फिनिश्ड हियर. द सेडिमेंट्स आर देयर, बट दिस केप्ट ऑन गोइंग अप. सो दिस इज यूरेशियन प्लेट से आप लाइक कर, यहां पर ईस्टर्न हिमालय. डू वी गेट दैट? सो ट्रांस हिमालय विजिबल एंड फॉर अ स्मॉलर लेंथ. और उसके बाद ये एंड कैन आई से दे गॉट फ्यूज्ड. सो आर दीज वाइडर? नंबर 2, व्हाट इज दिस? नैरो एंड फ्यूज्ड टुगेदर. ठीक है. So can't see Shivaliks distinctly. Is everyone okay? So दो difference, बहुत ही clear difference है, which are there. Is everyone okay? Where is more tension right now? Where is more tension? Tension has shifted to the east now. Tension has shifted more to the east. Is everyone okay? Third difference, I believe, is with latitude. Can you see from the map? Can you see from the map? The latitude of Western Himalaya, especially when we look at Kashmir, is higher. So higher latitude, 30 degree plus तक जाते हैं. This one latitudinally are more tropical. In fact, you will find closer to Tropic of Cancer. Do we find that or not? Now, इसके कई factors होंगे. So can I say 3A, 3.1? These are colder, more ice cover. Is that? I think relatively warmer. Ice caps shift northward. So ice caps only ऊपर. इनकी snow line काफी ऊपर जाके आती है, इनकी नीचे आ जाती है. Yes, snow line is the line beyond which, उसको tree line भी बोलते हैं, beyond which trees cannot be. So snow line उधर क्या होगा? उधर तो नीचे ही ठंडा है, so snow नीचे आ जाएगी. But here it is warm, so the snow will require more height to come. So eastern Himalayas, snow line will be higher. Here snow will come even at a low level. Do you get that? Ice line or forest line, snow or tree line. Is everyone okay? Another thing this will be that this will be less rainy. These are rainier. First of all, warmer tropics. Yes, you're closer to that. And I also say monsoon hits first. Monsoon will hit, the Bay of Bengal branch will hit them first, and that's it. Less rainy. Fourth, can I write? These are mostly barren rocks. Can I say more vegetated slopes? More vegetated slopes. Is everyone with me on this? 4 points. This you must understand. यानी चाहिए आपके पास. अब height की बात आती है fifth में. Height. Which one is higher? So when we say western is higher, now there is a dichotomy over here. Highest इधर है. Can I say highest is Mount Everest? Highest somewhere here. So can I say these are highest in the there, and here the average height is relatively less height. Is everyone okay? Average height की बात हो रही. Mostly peaks and glaciers are in western. तो वो यहाँ पे कर दिया ना भाई. जब आपको cold और ice cover यहाँ पर हो गया, इधर हो गया, high भी हमने यहाँ पर कर दिया, तो obviously for that reason, Neeraj, you will find that the glaciers यहाँ पर ज्यादा होंगे. Glaciers will be more. So can we say that eastern Himalayas have leeward and windward side both considered Ladakh as desert? I did not get that, Niharika. What do you mean by eastern Himalayas have leeward and windward side both? Every mountain will have a leeward and windward. Niharika, you are thinking your thought is reaching only Ladakh. If you look at things towards China, then they will become leeward. तो हो जाएगा. Remember, Himalayas form a barrier which does not allow the monsoon to go out. Now if Tibet lies here, so Tibet तो dry हो जाएगा. ऐसे ही कुछ यहाँ पर भी होगा. Do we get that? So we can't say that this one has leeward and windward. That does not have. Everyone will have leeward and windward. So that cannot be a very clear difference to talk of. Everyone, how many differences did I talk about? 7. 5 ही हो गया. Glaciers ज्यादा है, less rainy, but glaciers की वजह से river sources है. Sneha, it was given in book more fluvial erosion in eastern Himalaya. तो यहाँ पे less rainy है ना, यहाँ पर rainy है, monsoon hits first. So what will happen? Glacier से river लगाया मैंने, but यहाँ पर क्या है? Monsoon में flow ज्यादा होगा.
So what will happen? More erosion will happen. है ना? But everyone, since Neha has asked this, I have a thought to discuss with you. Yes, I just thought it as okay, Niharika, good thought, no problem. Western rise in number of stages, peaks are always in plane and rise abruptly. अच्छा ठीक है, अभी करता हूँ उसको भी. Sir, in fourth point, a consequence of majority, height, closeness to TOC and rainy, and am I missing something else? TOC नहीं समझ में आया मुझे. What is TOC? Tropic of Cancer and rainy. Consequence of fourth point is the consequence of height, closeness to TOC and rainy. बेटा फिर से सुन लो क्या वो कर रहे हो. Do information. अभी मैं इसको बता रहा हूँ. One idea, good idea came about this. Everyone. Please pay attention, and this is for geography optional students to think and link. Think and link करिएगा. Sorry. Everyone, please pay attention. Please pay attention. Is it okay to call this as Western Himalaya? This is Eastern Himalaya? Yes or no? Is everyone with me? So which one has a higher snow line? Which one has a higher snow line? Eastern Himalaya. Is everyone okay? This is Western Himalaya. Perfect. If I have to choose between G and F, not girlfriend, G for glacial and F for fluvial, can I say here it is glacial erosion, here will be fluvial erosion, here will be glacial, here will be fluvial? People who don't know fluvial, yesterday I told you fluvial is river, glacial is ice erosion, weathering erosion. Yes. So somebody just now wrote that it is Eastern Himalayas which get more eroded by rivers, greater river erosion. Do you get that? Why it is there with diagram with sense? Eastern Himalaya, why greater fluvial erosion? Apply logic, geography is logic. Okay, that is one thing. Second thing I also want to tell you that ice may cause glacial erosion, but I believe ice is also a protection against weathering. So who's getting eroded fast? Eastern में glacial is there but less protection, so it acts as a protection. So Western is less rate of weathering and erosion. समझे? दो concept लगा लिया तो हो जाएगा. Which one is more forested? Eastern will be more forested. So if you look at the forest cover of India, हमेशा the state of forest report Eastern में ज्यादा आता है. Do we get that? Eastern will be more. Where will be more wildlife, biodiversity? More wildlife and diversity. इधर क्या मिलेगा? इधर मिलेगा आपको क्या है वो हमारा स्नो लेपर्ड. मिलता है कि नहीं? इधर स्नो लेपर्ड ही मिलता है ज्यादा. You'll find that. या फिर उसके बाद आपने देखा कश्मीर में कौन सा डियर मिलता है? हंगुल डियर. और एक एनिमल आपको मिलेगा याक. यस नो? यही मिल रहे हैं. ईस्ट में आपको बहुत सारा मिलेगा, फुल वैरायटी. आप परेशान हो जाते हो एनवायरमेंट के लिए तैयारी करते हो तो. यस नो? रेड पैंडा इज वन ऑफ देम. रेड पैंडा, फ्लाइंग स्क्विरल एंड ऑल दोस थिंग्स. और जैसे आप प्लेन्स की तरफ आने लगते हो, प्लेन्स में तो फिर हमारे पास मैमल्स भी आ जाते हैं. बिग मैमल्स आल्सो कम. यस नो? इधर मोस्टली स्नो लेपर्ड आएगा. डू यू गेट दैट? कैन यू सी द कनेक्शन? अच्छा, यहाँ पर ह्यूमन बींग्स भी रह रहे हैं तो ट्राइबल्स भी ज्यादा है. ट्राइबल्स अलग अलग ट्राइब्स में रह रहे हैं. डू यू गेट दैट? तो थोड़ा सा अपना यहाँ पर अगर लिंक करेंगे, थिंक एंड लिंक, you will get better things. Do you see the role of ice also? And do you see what do I mean by higher snow line, lower snow line? This is what I wanted you to understand. Is everyone okay? निखिल कह रहा मेरा डाउट रिजॉल्व हो गया. निखिल जो भी डाउट था अब मुझे नहीं पता. So everyone, I want to tell you one thing. अब इसमें से क्या आया? A river comes. कैसे? A river comes. River brings in what? Sediments. पहले कौन से sediment लाएगी? Coarse sediments. Yes no? उसके बाद कौन से लाती है? Finer sediments और तराई होता है. यहाँ पे तराई है. अभी ईस्ट में क्या हुआ है? ये भी बहुत कम है. ईस्ट में दिस एंड तराई, एवरीथिंग इज वेरी लेस and the mountains seem to abruptly start from the plains. This side is plain and suddenly the mountains seem to start almost like this. West में क्या है? पहले शिवालिक्स आएगा, then middle Himalaya and this thing. So west are spread out or not? Is everyone okay? West is more spread out and here we have abrupt rise. In fact, यहाँ पर कौन सी बेल्ट होती है? Everyone, can you tell me which belt is there? तराई बेल्ट. इसमें क्या बोलते हैं? दुआर. On the eastern side we call it duar. Duar means the entry point. I'll talk about that later on. But do you get that? So difference में हम पूछ रहे थे. Difference में we are talking about high तो है. Yes. Rises gradually from plain. Rise abruptly. Did you understand the meaning of abruptly?
इफ यू आर इन दार्जिलिंग, आपने सुना है दार्जिलिंग में जाकर पीपल कैन सी दिस थिंग, कौन सा अपना कंचनजंगा, ऑन अ क्लियर वेदर डे दार्जिलिंग से आपको कंचनजंगा दिखाई दे जाता है, ट्रू और नॉट? यू कैन सी फ्रॉम वेस्ट बंगाल यू कैन सी दैट, ट्रू और नॉट? बट अब आप यहाँ पे चंडीगढ़ में खड़े हो और चंडीगढ़ में आपको दिख रहा है मुझे तो नंगा पर्वत दिख रहा है, नंगा पर्वत नहीं दिख रहा है, पहले तो आपको शिवालिक्स दिख रहे हैं, आफ्टर शिवालिक्स व्हाट विल हैपन, मिडिल हिमालय विल कम एंड देन इनर हिमालय विल कम, इधर क्या मेन हिमालय दिख जाता है आपको, डू यू गेट दैट? So is everyone clear about the difference between west and eastern Himalaya? 5 points, अच्छे points हैं, worth giving diagrams, worth giving examples. Will the examiner respect you for that? Did I post one answer also? एक आंसर डाला हुआ मैंने, टॉपर का आंसर उसमें डाला है, you would see how smartly he's used the boxes, he's made the map, he's used the case studies. That is what I want you to grow at. देखिए, imagination will come later on, जब थोड़ा सा आपके पास कंटेंट बढ़िया हो जाएगा तब बहुत अच्छा आने लगेगा. अभी keep on understanding, keep reading, there will be knowledge gaps, they will keep on getting filling with the discussions you are having in the class. Is everyone okay with western and eastern Himalaya? अब मुझे बताओ, my demand was 7 points, और कहाँ से लाऊं? Where do I get other points? ये तो हो गया, अब जबरदस्ती कहां से लाऊं? ह्यूमन ज्योग्राफी, बी स्मार्ट, बी स्मार्ट. सर्वेश्वर अब तो दोनों बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है. सो नंबर 6, इकोनॉमिकली विच इज बेटर ऑफ? इकोनॉमिकल एक्सप्लॉयटेशन कहां पर हो रहा है? मोर, बी इट फॉर टूरिज्म, बी इट फॉर रिसोर्सेज. मानसी आप बोलो ईस्ट का ज्यादा हो रहा है, ईस्ट का तो नहीं हो रहा. टेल मी टूरिस्ट सेंटर्स इन द ईस्ट. यस और नो? So there is greater fluvial erosion in eastern Himalaya but no Bhabur belt. अरे सब स्क्वीज हो गया ना बच्चे, नो भाबर बेल्ट. भाबर है, सब जगह होगा भाबर, कम होगा ना बच्चे, एल बी लेस. मोहम्मद आरिफ कह रहे हैं इज इट द रीजन फॉर फ्लडिंग इन असम? आरिफ अगर यूट्यूब पे जाओगे ना अब तो डाउन टू अर्थ द हिंदू सबने पूरा उसके साथ बना दिया, 2-2 3-3 मिनट का वीडियो की क्यों फ्लड आती है उस वैली में. ठीक है, अचानक ऐसे मत करो, ये कैसे हो गया. डेफिनेटली द वैली इज वेरी नैरो, द रेनफॉल इज वेरी हैवी. थोड़ा सा डाउन टू अर्थ टाइप करेंगे. पहले भी बताया है, पीपल हु अटेंडेड माय फर्स्ट क्लास, डाउन टू अर्थ इज द मैगजीन. और कुछ नहीं लगा सर वो मैगजीन कहां मिलेगी? अरे भाई उनका वेबसाइट पे वो सारे आर्टिकल डाल रहे फ्री में, आप लीजिए तो सही. डाउन टू अर्थ हैज वीडियोस आल्सो, प्लीज वॉच दैट. ठीक है आरिफ, जरा देखिएगा उसको, आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी मिलेगी. सो वेस्ट में हिल स्टेशन है या नहीं है? हिल स्टेशन है, रिसोर्सेज है, बाबा का दवा खाना इधर ही है. यस, पतंजलि पीतांजलि सब कुछ उधर मिलता है कि नहीं मिलता? इकोनॉमिकली मोर. यस नो? एंड दैट इज व्हाई वेस्टर्न, नो इट इज नॉट लेलिंग वी आर लुकिंग एट मेडिसिनल प्लांट, वो सब जगह पर, बट वेस्टर्न में बहुत ज्यादा काम हुआ है, ज्यादा काम हुआ है, तो उस वजह से इकोलॉजिकल डैमेज भी ज्यादा हुआ है. यस नो? सो डिजास्टर्स भी हो रहे कि नहीं? उत्तराखंड डिजास्टर, मोर डिजास्टर प्रोनेस. 6 में relatively less economic exploitation. But I want to say, in recent times, this is picking up. How is it picking up? How do I know that? Indian State of Forest Report 2021 tells me that the forest cover of Northeast has gone down. One of the reasons is developmental activities. रोड बना रहा है, ब्रिज बना रहा है, स्ट्रेटेजिक एरिया है, डिफेंस पोस्ट एंड एवरीथिंग. सो आई एम इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स आल्सो. हो रहा है नहीं हो रहा है? लेलिन बोला आंध्र प्रदेश, वो सॉरी अरुणाचल प्रदेश, लेलिन इट विल हैपन इन नॉट, इट विल हैपन इन नॉट. अच्छा एक बात बताओ एवरीवन, यू आर थिंकिंग ओनली ऑफ दैट. अभी पाम मिशन की बात हो रही है, पाम मिशन में किसे टारगेट किया गया है? नॉर्थ ईस्ट की बात हो रही है नहीं हो रही? पाम ऑयल, पाम मिशन, use that, no, all those things, current affairs. How do you see? I said my courses, I promise you whatever is current that will be included in my lecture, but I'm saying would you also be prepared for that or not? आप भी तो करोगे. ठीक है, चलिए 7 में मुझे बताइए सोशियो कल्चरल. इतनी सारी यात्रा होती है, पिलग्रिमेज, ये सुनो, कैलाश मानसरोवर, ठीक है, अमरनाथ यात्रा, वैष्णो देवी, ट्रू, और अनंत है यार वहां पर. पूरी चार धाम पे कितना डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट हुआ, यू कैन थिंक ऑफ इट. द होल चार धाम नेटवर्क विच इज देयर, इकोलॉजिकली नॉट दिस थिंग, बट लोगों की मान्यता है तो करेंगे या नहीं करेंगे? सर ईस्ट में भी है, नॉर्थ ईस्ट में भी सर, कामाख्या देवी, लेस एक्सप्लॉयटेशन देयर इज देयर, और मैं कहूंगा एट अ माइक्रो स्केल है. यस सो वी हैव अ वेरी स्ट्रांग दिस थिंग प्रेजेंट. जब हम बात करते हैं कामाख्या देवी की बात करते हैं, पीपल गो बट हाउ मेनी ऑफ यू गॉन देयर फॉर दैट? वैष्णो देवी तो मतलब ऑलमोस्ट यू नो पीपल शादी के बाद, यू नो नॉर्थ इंडियन सोच रहा है वैष्णो देवी माता के यहाँ जाना दर्शन करना. शादी के बाद नहीं, थोड़े बाद में चले जाना. कल शादी हुई, आज वैष्णो देवी का ट्रिप कैसे रख लिया? व्हाट केम टू योर माइंड? वैष्णो देवी का ट्रिप, आज शादी, माँ का आशीर्वाद लेना. माँ का आशीर्वाद तो यही मिल जाता है. अगर हनीमून जाना, गो टू अ प्रॉपर प्लेस. ठंडा मौसम, प्रियंक बोला ठंडा मौसम और कहीं नहीं मिल रहा है. माता के यहाँ पे कचरा फैलाने पहुंच गया, जाओ पूरी भक्ति से जाओ यार. भक्ति शुड नॉट बिकम अ पिकनिक, नो. इफ यू हैव भक्ति प्लीज गो. पहले मतलब माता को थैंक यू बोलने जा रहा है कि माता मेरा हो गया शादी, वरना तो मैं तो ऐसे ही जाने वाला था. यस, अरे यार इतना सारा है, कसौली है, धर्मशाला, उधर चले जाओ. नहीं सर उधर भी जाते हैं सर, लेकिन वैष्णो देवी होकर जाते हैं. आबादी बहुत है यार सब जगह.
सो पिलग्रिमेज का पिलग्रिमेज हो जाएगा, हनीमून का हनीमून हो जाएगा। फिर यार एक ही चीज है, मतलब आई थिंक जो जो यू नो द आश्रम्स दैट वी हैव, ब्रह्मचर्य आश्रम, यस गृहस्थ आश्रम, तो गृहस्थी है वो, गृहस्थ में जाके वानप्रस्थ और संन्यास वाले काम क्यों कर रहा है? अभी तो इनिंग स्टार्ट हुई है, यस 2020 का मैच है, बैटिंग करो इधर। तुम जाके बॉल ट्राई ट्राई कर रहा है, ये सुनो पिच देख रहा है, पिच सही है कि नहीं, सैंड सही है, बाउंस है नहीं है, अभी छोड़ना है, बैटिंग करो। दैट्स व्हाट वी टॉकिंग। तो अगली बार शादी हो जाएगी वैष्णो देवी मत पहुंच जाना कि वैष्णो देवी जा रहा हूँ, सोशो कल्चरल जाना, हिल स्टेशन पे जा, थोड़ा सा इन्वेस्ट कर लो, सरकार इतना कुछ बना रही है तुम्हारे लिए हिल स्टेशन। रेहान बोला गोवा जाऊंगा, रेहान जहाँ मर्जी चले जाना, ऐसे नहीं कि वहां पहुंच गया। चलिए अरे सचिन सर ने मना कर दिया शादी के बाद वैष्णो देवी जाने के लिए, मुझे माँ का आशीर्वाद से, अच्छा चले जाना यार, बाद में मुझसे लड़ेगा कि ऐसे बोला था, जहाँ जाना जाओ, सोशो कल्चरल डू वी हैव डिफरेंट। और अगर किसी को माँ का आशीर्वाद ही लेना है ना, जाके सीधा कामाख्या देवी जाना, फिर सीरियसली बता रहा हूँ, अगर इतना ही आशीर्वाद है तो सच में नॉर्थ ईस्ट चले जाओ, कामाख्या देवी, तब तो पता भी चलेगा। ये सुनो, इट्स नॉट इजी टू रीच ओवर देयर। चलिए, और कामाख्या देवी जी के बारे में पढ़ भी लेना, शादी के बाद सूटेबल है, कोई टेंशन नहीं। भवन में वर्सेस डिफरेंशिएशन। चलिए एवरीवन 7 पॉइंट्स हो गए, मेरी तरफ से तो हो गए, अच्छे पॉइंट्स है कि नहीं? सर ईस्ट मोर सेटल्ड एग्रीकल्चर एंड टेरेसेस, इंटीग्रेटेड एनिमल हस्बेंड्री, ऐसे कैसे कह रहे हो यार? आई नेवर थॉट ऑफ दैट। वेस्ट में हाई फॉरेस्ट डिपेंडेंस, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, किसने कहा ईस्ट में शिफ्टिंग एग्रीकल्चर बहुत है? कहां से पॉइंट लेकर आए? वेस्ट में हाई फॉरेस्ट डिपेंडेंस, अरे ईस्ट तो सारे फॉरेस्ट है, सौरभ कहां से लेकर आए? मोर सेटल्ड एग्रीकल्चर इन द ईस्ट टेरेस में, ऐसा तो फॉरेस्ट रिपोर्ट भी नहीं बता रही, कहां से लेकर आए जल्दी से बताओ। ये पंजाब केसरी पढ़ रहे हो, घटना चक्र पढ़ रहे हो, कहां से लेकर आए? इंटीग्रेटेड एनिमल हस्बेंड्री हो रही सर उधर, ये तो वेस्ट वालों को तो अकल ही नहीं है सर। वेस्ट में तो हाई फॉरेस्ट डिपेंडेंस, आग लगी हुई है, फॉरेस्ट फायर चल रहा है यार उधर, क्लाइमेट चेंज की बड़ी मार चल रही है। अच्छा सौरभ का सर वेस्ट का थोड़ा ईस्ट हो गया। सर रिवर सिस्टम इज स्ट्रॉन्ग इन वेस्टर्न हिमालय, सर दे आर नथिंग एट ऑल। बेटा वेस्टर्न से ओरिजिनेट होता है, ओरिजिनेट होता है, एंड आई वांट टू टेल यू पीपल हु सीन रिवर्स इन हिल्स, वो रिवर्स बहुत कम होती है, दोज आर स्ट्रीम्स, बहुत पानी नहीं होता उसमें। पानी की वॉल्यूम कब बढ़ती है? व्हेन दे रीच द प्लेन्स। सो इफ यू लुक एट अलकनंदा भागीरथी ना, वो तो दे आर फ्लोइंग इन द डीप गॉर्जेस, वो तो पतली रिवर, बट व्हेन दे रीच ऋषिकेश एंड हरिद्वार, देन देयर ट्रिब्यूटरीज विल मीट, तब जाकर वो मारपीट करेंगे। डू यू गेट दैट संजय? सो रिवर स्ट्रीम्स तो छोटे छोटे होते हैं, पत्थर की वो स्ट्रीम्स होती है। यहाँ तक क्लियर हो गया? डिड वी गेट द आइडिया ऑफ हिमालयस? कर लेंगे क्या, मैं आगे बढ़ सकता हूँ? कैन आई मूव फर्दर? बहुत सारी हमने बात कर ली हिमालय के बारे में। डिड वी अंडरस्टैंड हिमालय का सिचुएशन सीक्वेंस? नाउ यू कैन रीड फ्रॉम एनसीईआरटी, नाउ यू कैन रीड फ्रॉम खुल्लर आल्सो। टाइम निकालो, प्लीज डू दैट एवरीवन। व्हेन वी लुक एट गुड आंसर्स, ये सही, अब सचिन सर मिल गए, वी विल राइट दैट। हैट्स ऑफ टू द पीपल हु हैव रिटन दैट। सचिन सर टोल्ड देम हाउ यू कैन डू दैट एंड दे रोट इट, सो मैजिक उन लोगों ने किया। डू वी गेट दैट? सो एट योर एंड फर्स्ट गेट द कंटेंट, first get the content, first get all the dimensions the way I'm generating dimensions. When you have the dimensions, then you should be working on other aspects also. ये समझ में आ गया? इधर क्या हो रहा है? ज्यादा कंप्रेशन हो रहा है। somebody said सर यहाँ पर क्यों नहीं हो रहा? यहाँ पर भी हो रहा है, यहाँ पर भी हो रहा है। rivers are bringing those sediments but they have all got space. ठीक है, प्लेन्स में आ जाए बच्चों, प्लेन्स में। so third physiographic division is North Indian plains. Fourth is coastal plains, इंडस गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन, IGBP भी कह सकते हैं। so he said glacier passes. I don't know what I said and what you want to know. मैंने क्या कहा था जल्दी से बताओ। ग्लेशियर पासेस जो मैंने आपको बताया, I told you the mountains are difficult to cross, but if there is a gap in the mountain, this might be created by a river या फिर U-shaped valleys by the glaciers also. इसको मैंने पास कहा था, ठीक है, और तो कुछ नहीं कहा। अब आप क्या समझे मैं, मुझे नहीं पता, प्लीज रिफ्रेज योर क्वेश्चन। इज एवरीवन ओके? दो प्लेन्स की हम बात करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टू प्लेन्स, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स एंड कोस्टल प्लेन्स, ठीक है। नॉर्थ इंडियन प्लेन्स आर इंडस गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स, कैन आई से दैट? सो आई वांट टू टेल यू, इसको हटा दे, फोर्थ को भी हटा रहा हूं, सो वी आर इन द थर्ड ग्रुप। कैन आई से that plains are, what do I mean by plain? Nearly flat expanse of land at or near sea level, that is plain. I did not say exactly flat, nearly flat. See that? एक तो ये है, everyone can you see this, and other is this. These are also plains. Everyone, do you get that? इनको क्या बोलेंगे? Rolling or undulating plain. What is this? Flat plane. Absolutely flat plane. अब absolutely flat plane नहीं होता, थोड़ा बहुत uneveness होगा। Is everyone okay? So if this word come rolling plane, undulating plane, don't come into sight. And I want you to start using them in your vocabulary. ठीक है? अच्छा, एक ये plane है, and the rivers are passing through it.
Do we get that? So rivers are passing through this. इस प्लेन को क्या बोलेंगे? Dissected plane. Do we get that? Dissected plane. Discontinuous. चलेगा? Flat plane, rolling plane, dissected plane चलेगा? What do we mean by plane? Dissected, cut by the rivers. If these words come, don't commit suicide. So there used to be a mountain or a plateau which got eroded, and now what is left behind is this. Is everyone okay? Is this a plane? True. Another one is that there was a depression. And with sediments, with time, that got filled up with sediments. This is also plane. Looking at plane 1 and plane 2, I cannot say how they were created, but can I say plane 1 is a degradational plane and plane 2 is an aggradational plane. Vocabulary for all of you, geography optional student, vocabulary. What is dissected plane? What is discontinuous plane? What is flat plane? What is rolling plane? What is degradational plane? What is aggradational plane? प्रसेनजीत कह रहे सर aggradational की जगह मैं depositional लिखना चाहता हूँ, लिख लो. Which one is more technical? Aggradation. So degradation का opposite, aggradation. For an optional student, Prasenjit, can I give you this vocabulary? If you were a GS student, I would have not insisted. I'm just giving you. My intention is to give you choices. Depending on your preparation, you can choose what Sachin sir gave, what I read from the book. Let me also use this. The examiner is already a geographer. He would know things. Is everyone okay? What are we talking about? Indus, Ganga, Brahmaputra plains. We are talking about Indus, Ganga, Brahmaputra plains. And I have through this class, because most of you, if you are beginners, you joined straight from paper 2, you might not have the vocabulary. So before starting, it's my duty to tell you what are plains, how are they formed. And Priyank could not resist it. He is saying North Indian plains are an example of aggradational plains. Do you agree with Priyank or not? Priyank is telling us that North Indian plains are an example of aggradational plain. So your question is, where did the aggradation happen and where did the sediments come from? Jaldi se batao. Where did the aggradation happen? Where did the sediments come from? Hanji sir came from Himalayas. So I was just thinking that most people will say Himalayas. And most people will say that it is the four deep. Perfect, Sagar, that's okay. My question is, why would the sediments not come from the peninsula? Why not? So, but peninsula is shield, it is hard rocks. That's okay. कुछ तो टूटेगा. It's been millions of years. Yes, sir. Some of you are hardcore. यार मैं जो भी बोल दूं तुम कुछ नहीं करने वाले. But I'm still cracking the knocking. And many of you are risk averse. गलती नहीं करनी. What if I make mistake? Everyone will laugh at me. दीपक is saying 4 deep created later. दीपक पता नहीं कौन सी चरस है भाई. 4 deep तो सबसे पहले बना हुआ है. 4 deep was created. भाई एक बात बताओ दीपक, ये पेनिनसुला, ये 4 deep, ये हिमालय. Yes. अब रिवर आया. So will the river deposit sediments? Yes or no? Himalayan sediments. Rivers are coming from here also, no? Will they not deposit sediments? बोला सर वो पहले आया बाद में आया. सर ये हिंदू सेडिमेंट वो मुस्लिम सेडिमेंट, ऐसा थोड़ी हो सकता है, दोनों तरफ से आएगा. So wind erosion from peninsula must be there. अरे बेटा एक बात बताओ, everyone who's talking about wind erosion, tell me, are these sediments more fluvial? No. Wind will come when we आएगा. बोला इधर से wind आया सर, इधर से wind आ गया, इधर से water आया. कहाँ से imagination ला रहे हो? इधर से चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सोन, are they not coming? वो भी आएंगी. दामोदर वो भी तो लेकर आएगा. मतलब ऐसे लॉजिक देने लगते हो ना, सब हिला देते हो. लोअर वेलोसिटी लोअर सेडिमेंट्स. देखो एक और इंप्रेस करने को आया है कि सर लोअर वेलोसिटी लोअर सेडिमेंट्स. मैं सिंपल पूछ रहा हूँ भाई कहाँ से आया, कुछ बता रहे हैं. बड़ी बात है, मत बताओ भाई, मुझे भी डर लगता है इतनी बड़ी बातों से. इतना तो मैंने नहीं आपको बताया. एक तो है ये पंजाब प्लेन, उसके बाद क्या है
ये कौन सा है? राजस्थान प्लेन, ठीक है। उसके बाद है, इसको बोलते हैं गंगा प्लेन। अपर गंगा, मिडिल गंगा, लोअर गंगा, एंड दिस इज ब्रह्मपुत्र प्लेन, है ना। फिर ये मिल जाएंगे। ये कौन सा सिस्टम है? दिस इज इंडस सिस्टम से पंजाब निकलेगा, इसकी बात होगी। एंड आई एम सेइंग द रिवर्स व्हिच आर कमिंग फ्रॉम हियर, दे वुड ब्रिंग देयर सेडिमेंट्स, यस और नो? आई एम सेइंग व्हाई वुड दीज नॉट ब्रिंग देयर सेडिमेंट्स? सोनल बोलेंगे 4 deep is the reason behind Ganga flowing east. Slope is the reason, सोनल, slope is the reason. पहले ही दिन बताया, रिवर्स किस पे फ्लो करती है? स्लोप पे फ्लो करती है। यू डिड नॉट पे अटेंशन, ये बना के दिया था। क्या है ये? कुछ पहचाना हुआ लग रहा है? चलिए गुजरात लगता है, नहीं, दिस इज अरावली, दिस इज विंध्या, दिस इज सतपुरा, दिस इज वेस्टर्न घाट, दिस इज आर डिवाइड, वाटर डिवाइड। तो यहाँ से रिवर्स ऐसे फ्लो करती है, इधर हिमालय है, हिमालय से रिवर ऐसे फ्लो करती है। ये पहले बनाया था ऐसा। दिस विल डिसाइड, दैट मीन्स if this is Ganga plain, everyone please understand, अगर ये गंगा प्लेन है तो can I say this area would be higher and this area at the delta would be at sea level? समझ में आया सोनल? यही कहीं पर वाटर डिवाइड है, नहीं है? सर विजुअलाइज नहीं कर पा रहे, तुम लोग को विजुअलाइज बहुत चाहिए। डू यू गेट दैट? ये भी बता देता हूँ कौन सा रीजन है। यहाँ पर ना सबसे ज्यादा अंबाला रीजन, अंबाला सहारनपुर रीजन जो है, Saharanpur region is one of the highest regions of the Ganga plains, around 350 meters high above what? Above mean sea level. Remember plateau का क्या था? Average height 600 meters above mean sea level. The peninsular plateau average height. Shivaliks was 900 meters. Yes. Himadri was 6,000 meters average height. So हमारा जो plane है, did I give you the definition? At or near sea level. At or near sea level. So plane which is where you have this Ganga Sagar, मेला लगता है ना? At the delta. ये at sea level है। जो लोग गंगा सागर वहां पर जाते हैं दर्शन करने, दैट इज एट सी लेवल, बट प्लेन थोड़ा सा ऊंचा है, ऑलमोस्ट 300 मीटर। सो टेल मी, डू वी हैव अ रीजन व्हाई गंगा इज फ्लोइंग लाइक दिस, व्हाई यमुना इज फ्लोइंग लाइक दिस? स्लोप ना, एंड द रिवर्स जॉइनिंग देम। लॉजिक बच्चों, ज्योग्राफी इज लॉजिक। 4 deep, now the question was, is 4 deep the reason for the direction? No, 4 deep तो गड्ढा है, इसमें भर गया, 4 deep is full now, but in that itself, okay, so what I do is, everyone, I take a cup and fill it with food. I fill it with noodles. ये मैंने नूडल से भर लिया। This is a bowl. सबको समझ में आ रहा है? मेरे पास एक बोल है and I filled it up. Get it? If I put some syrup on this, कुछ सिरप मैंने डाला, तो सिरप if I pour, where will the syrup flow? Syrup will flow like this. ऐसे मैंने कुछ सॉस डाला, if I put sauce, will it flow like this or not? Nikhil, it will always flow downward only. But will the height of the noodles decide where will it flow? You are telling me कि the slope, the direction of Ganga is because of the 4 deep. No, 4 deep तो has got filled up now, but that filling has not been uniform. थोड़ा सा एरिया हाई है, थोड़ा सा लो है, so this is where it is high, this is deciding the rivers. अब यहाँ आपने देखा लूनी river flows like this, बनास river, लूनी, बनास, और आपने सरस्वती घग्गर river सुना, घग्गर सरस्वती, that flows here, yes or no? ऐसा सुना है नहीं सुना है? या मेरी क्लास में आके सुनते हो तुम लोग पहली बार? कई लोग कैसे सर यहीं पे आके सुनते हैं। Everyone is the doubt clear? I have no issues you asking loud, जो पूछना पूछो, but you should have the sense and understanding of that doubt. Everyone clear? सब मेरे साथ है? So doubt से मुझे याद आया, and I also want to tell you, beginners do not carry an ego to the class. Learn from mistakes, and mistakes will happen. Be proud, mistake होगी। So there was this young veterinary doctor. Vet कौन होता है? एनिमल डॉक्टर। young veterinary doctor, he joined the army, Indian army join किया। So have you heard of cavalry in Indian army? Cavalry में कौन होते हैं? Horses. So army में जो horses आते हैं ना, the horses which come for army, they're very good quality and they're very costly. Even President's Guard you would have seen horses. Yes, I don't know how many of you have done horse riding. Generally अच्छे horse पे horse riding is a very big challenge. Yes or no? और जो छोटा मोटा करवा देते हैं वो घोड़ा नहीं होता, घोड़ी होती है, छोटी वाली जो होती है। Horse riding is a challenge. Yes. Knowing the animal, nature of the animal, being with the animal, that's there. खच्चर पर की है निखिल ने, ठीक है। वो तो रिमेंबर जब आप जाओगे माता के दर्शन करने हनीमून में, सो ऑन द वे यू विल क्लिक अ फोटो ऑन खच्चर आल्सो, यू एंड शी स्माइलिंग, वैसे अपना चूड़ा और झालर दिखाई दी और तुम ऐसे 56 इंच का सीना और खच्चर। नहीं सर मैं खच्चर पे नहीं खिंचवाऊंगा, तो ठीक है थोड़ा ना हिमाचल में चले जाना, थोड़ा इज्जतदार मिलेगा, याक पे खिंचवा लेना।
ठीक है, वो पहाड़ पे जा रहे हैं, घोड़ा गधा जो भी मिल जाता है उस पे बैठ के फोटो खिंचवाते, या विल लुक बेटर, थोड़ा सीरियस लगेगा, कुछ तो वाइल्ड एनिमल टाइप किया। आई वांट टू टेल यू these horses are good and people who are into horse riding, मजा आता है इस घोड़े पे अगर राइडिंग करने को मिलता है। और आई वांट टू टेल यू, अगर आप आईएएस बनते हैं ना, आपको खूब राइडिंग का मौका मिलेगा। अकेडमी में पुलिस ट्रेनिंग में तो बहुत ज्यादा सिखाते हैं, यस, अदरवाइज ऑल्सो। सो अगर आपने मिस कर लिया है तो बिल्कुल मौका है, ठीक है। बट ये है कि एनिमल का डर अगर बचपन में होता है तो आगे थोड़ा मुश्किल होता है। आई रिमेंबर आई स्टार्टेड लर्निंग हॉर्स राइडिंग एट अ वेरी अर्ली स्टेज, सेकंड क्लास में, and I fell from the horse. I fell from the horse and then I was afraid of the horses. I never went. Then in 6th or 7th class I started again. And then I became friends with horses and everything. So that is good. तो थोड़ा टाइम लगता है. Yes. So डॉक्टर साहब हैं, न्यू डॉक्टर, and he has joined the army as a vet and a new horse come. Very good quality horse come. तो जैसे ही horse आएगा, animals when they come, so डॉक्टर का काम क्या है? Vaccinate them. If you have pet animals, you get vaccinated, your dog and cat. तो इसने कहा मुझे वैक्सीनेट करना है, तो this fellow, young boy, उसने अपना साइकिल उठाया. Yes, I'm telling you, 40 years ago. 40 years ago. So he picked up his cycle and went to the place where the horses were and he was supposed to vaccinate them. Generally, when you are approaching the horses or animals with some medicine or injection, no, these animals become afraid. They want to run. So generally, have you seen वो घोड़े के यहाँ पर ऐसे blinds लगा देते, so that घोड़े को दिखाई नहीं दे. So आप पीछे से इंजेक्शन, घोड़े को पता ही नहीं लगेगा कौन आया. But probably the blinds were not proper. The horse could see this doctor coming, and the horse became very afraid and started moving here and there, totally restless. And that restless horse kept on moving piche piche, and there was this marshy muddy area, and the horse slipped. Naya horse hai, costly horse, slipped and broke its leg, tongue toot gayi. New doctor, start of the career, wants to vaccinate the horse, costly horse, घोड़े की tongue toot gayi. Senior doctor started shouting at this young doctor, nonsense, you don't even know, इतना है, 10 years of your salary will go into this horse. You don't know what damage you've done to Indian Army. देश के खिलाफ तुमने काम किया, anti-national, everything he told to this young boy. This young boy really lost it. Yes. So he said, now they will throw me out of the army. He decided to go to the CO, commanding officer, yes, of the unit. So he went like that, pura कीचड़ and everything, all muddy and everything, all haggard, cycle उठाया बेचारा, went to the commanding officer, and commanding officer saw this boy. He said, yes sir, I have to tell you something. उसके होश देख के commanding officer understood बेचारा बुरी हालत. He said, meet me in the garden. So he went to the garden. In the garden there was a spread of a buffet. Commanding officer, his wife had thrown a party, and there was a very well spread buffet, बढ़िया सा खाना लगा हुआ था. So the lady over there, she invited the doctor, कुछ खाओ? No madam, मैं नहीं खा सकता. He's full of guilt. Yes or no? He's full of guilt, he's full of shame, and he's full of fear also. So अब तो वैसे भी जाना ही है. Maybe last time I तो said bye bye. Yes or no? मैंने कहा कुछ तो खाओ, इतना अच्छा. Then the CEO came. She said, come, have some, eat something, and then we'll talk. He said, no sir, आज बहुत blunder हो गया. He said, I can see from your हालत, that's okay. Blunder has happened. At least have something. खाओ पियो. He was very happy. The CEO is so sweet. CEO said, yes, what happened? He said, sir, this happened. The horse, I was trying to give the horse the vaccine. वो खुद ही डर गया and slipped and broke the leg. So she said, okay. So he said, I'm very sorry, sir. I know I'll be thrown out of the army. I know the loss to the army. I know my salary cannot match it. CEO started laughing. He said, you are a vet, no? Career as a doctor. You will kill many. You will try to save them. Many will die. Many will die. This is just the start of your career. Yes or no? This is just the start of the career. And did you kill it? Or did you break the leg? You were just following the procedure. It's an animal. Animal got restless. And army has ways to use the horse. This horse, we will not use it for golf. बाकी चीज में कर लेंगे. घबरा के रखा ना. Be okay to make mistakes. Learn from them. This is just the start of your career. So you will face failure at many stages. You'll come to the class. You'll learn. I thought this way. Sachin sir said this way. Oh, now I understand. What a foolish question I was asking. That's okay. You'll make that. Yes or no? शाम को डिप्रेस हो रहा, मुझे मैसेज भेजा, सर मेरे सेमेस्टर एग्जाम है एंड योर क्लास आल्सो सर, हाउ डू आई मैनेज? एज इफ यू नो यू हैव टू चूज बिटवीन करीना एंड कटरीना. वैसे तो दोनों ही नहीं मिल रही है, तो तुम्हारी मर्जी ना. योर एग्जाम, गिव योर एग्जाम. भाई आई टोल्ड यू 8th 9th and 10th हॉलीडे है, कवर अप कर लेना. सर आई एम इन अ जॉब सर, आई कुड नॉट सबमिट माय आंसर ऑन टाइम सर, आई फील सो गिल्टी सर, विल यू प्लीज चेक? आई चेक, नो प्रॉब्लम. भेज तो सही. यस और नो? एंड देन दिस फेलो हु सेंडिंग ऑल रॉन्ग. कल मैंने बताया व्हाट आर द एरर्स, सर प्लीज मेरा जरूर चेक करो. तेरा भी वही एरर है, तू स्पेशल है. सचिन सर ने क्लास में मेरा मजाक उड़ा दिया. आई फेल्ट सो बैड. यार your question was so funny, so I just said that. Don't take it personally. Even the broken leg horse is useful. Army has ways to deal with it. So my class has a lot of learning even from your questions which are wrong. Many people learn from your questions. Am I correct or not? Do you learn or not? Many people learn from wrong questions. That's okay. But the idea is, are we taking the class forward or not? So many people I've seen, like Unacademy में वैसे नहीं होता था. हमें class end में, batch end में, offline, students write their experience. But Unacademy में they give us hat and something and they write their comment. So those really tell me, like students are creating a lot of it. He said, I created this and that. When we read them, we know that people are creating from their errors also. So be that beginner
And I want to tell you, after 40 years, that doctor is one of the most acclaimed doctors, veterinary doctors. Very good career, amazing rich career. अभी तो start है यार. Make mistakes. Yes or no? Honeymoon के लिए वैष्णो देवी मत जाना यार. That's my idea. बाकी ठीक है, बजट पे डिपेंड करता है. That's also there. Are we done with this? So first of all, people who are the visualizing lovers, do you visualize where are the plains of India? Let me give you an interesting part. Let me give you an interesting thing. I don't know how many of you know this. You tell me if you knew this. What is A? What is B? What is A and B? क्या नाम है? I know they are Gulf. One is Gulf of Khambat, one is Gulf of Kutch. I want to tell you, in Pleistocene time, they were connected. This was all water. This was all water. Then what happened, sir? Well, Luni, Banas, Ghaggar, Mahi River, Sabarmati River. Yes, इन लोगों ने क्या किया? Filled up. क्या बन गए? Gujarat plain. And the two got disconnected. Two of them got disconnected. Interesting or not? Geological events. सोचिए अब ये सेपरेट है, आपके लिए क्या है? दो अलग. Otherwise, this was an area under sea also. Under sea तो यहाँ पर क्या मिलेगा? बहुत सारा salt मिलता है. In fact, Gujarat produces one of the largest amount of salt for the country. Yes or no? और ये वाला बेसिन अब तो यहाँ पर क्योंकि sediments इतने आ गए तो will it become a shallow area or not? Shallow area. So in the winter season, when there is no water, this becomes dry and salt. Salt shines, so it becomes white. आपने सुना रन का मेला लगता है? Have you heard of that रन का मेला? White salt pans are created. But in the monsoon season, what will happen? In the monsoon season, what will happen? Water will come. So this will become waterlogged. So run gets water during the rainy season, and in the dry season, what happens? It all dries up, salt comes on the surface, and you have the run festival. मौका मिले तो होकर आना. वहाँ honeymoon कर लेना. Run festival is good for honeymoon. सब बता रहा हूँ तुम्हें. Do you see such interesting events have created our plains? Gujarat plains were created like this. Your river Indus used to flow through this. अब Indus shift हो गई है. Indus इधर shift हो गई. तो पहले यहाँ पर होती थी. Remember Indus Valley civilization. So Indus Valley civilization. Did you hear of Gujarat? Lothal, Dholavira, and all these things. Yes or no? Kalibangan. ये सारे आते थे ना हरियाणा वाला. तो कहाँ गया वो? Where is Indus River? Indus River has also shifted because of climate change. This area became dry. This area became dry, and the desertification happened. And because of climate change, because of our smart activities, is the desert shifting further eastward or not? हरियाणा राजस्थान तो गए, अब तो दिल्ली जा रहा है, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पंजाब, are we getting desertified or not? It's happening in front of us. It's happening in front of us. So this is what your examiner wants you to know. He doesn't want you to know what is in NCERT alone. Okay, Rajasthan plain, we call it Marustali, this is Punjab plain. You need to know more about it. You need to know the contemporary aspects of it. समझ में आ रहा है? Interesting. हिमालय हो गया. Now we are supposed to go on plains. चलिए ब्रेक ले लें जल्दी से. आज थोड़ा जल्दी ब्रेक ले लेते हैं, फिर प्लेन्स पे बात करेंगे. Is everyone with me? कोस्टल प्लेन नहीं करना आज. And if you have doubts, 1621, 1630. And everyone, I have a question. You started the class. Today is 8th class. Are you gaining confidence? Are you gaining some comfort in this? ऐसा लग रहा है कि हाँ कर लेंगे यार. Starting में I can understand. I put a lot of expectations on you. मैथ भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए. ऐसा it will happen. Just keep that trust. So I'll meet you after the break. किसी ने कोई question पूछा, so let's take that question also after the break. Okay, take a quick break. Arpita says, I started as my optional, then many people told me that the syllabus is very lengthy, but now I'm using the tools of mapping. Yes, they appreciate you for that. Great, Arpita. Now you're making them jealous. Good, good, good. I'm happy that you're using it. Chali, I'll meet you in 8 minutes, 16:30.
So is everyone back? We're talking about Indian plains, and we're talking about first the plains of Indus, Ganga, Brahmaputra. I've given you a term called aggradational plain. Our plain are aggradational plain. Is everyone okay? Sure. So I think in the north, after Shivaliks, do we have HFF? Is everyone okay with the idea of HFF? Himalayan frontal fault is the boundary between Shivaliks and our plain. Yes, remember कुछ? मुझे भी नीरज पूछ रहे थे थोड़ी देर पहले, शायद नीरज ही पूछ रहे थे, I don't remember the name, about the things which are hidden beneath. And can I say नीचे क्या होगा यहाँ पर? मालवा, विंध्या, ऐसे विंध्या चल रहा है. True. So this area refers to our plain. ऐसा है. Can I say again wider to the west? Can I say this is the Assam plain? Wider to the west. In fact, it is almost 350 to 500 kilometer wide over here. Get that? And this part can be, this is narrow, no? Yes. So 60 to 200 or 120 kilometer wide over east. Get it? Here is the Indus part, Indus plains, Ganga plains, and this is Brahmaputra plains. Is everyone okay? Can I call them, can I use the word riverine for this? Riverine sediments. Is it only riverine? Well, the dust can come with the wind also, so there is evolution also, but the predominance is. How is it created? Infilling of 4 deep. Can I say that? By what? Rivers. Rivers have brought, so उन्होंने अपने sediments डाल दिए. How does the 4 deep look like? Remember I just told you about the bowl of noodles. Bowl of noodles. Yes. So can I say this is the 4 deep? 4 deep was, this 4 deep was around 6 kilometers deep. You can imagine 6 kilometers deep. Not only Himalayas are 6 kilometers high, or this is not keeping in mind Himalayas. Everyone, this side is west, this side is east. So this side is west, 4 deep, east. वैसे तो भर गया, 4 deep has got filled up by sediments. So this line is a, I've just created a figure for you. This whole area is the 4 deep, has got filled up. Is everyone okay? But I want to tell you on the surface of it, I have, on the western side, I have it like this. Can I say this is Rajasthan plain? This is Aravalli. And this is almost at sea level, delta. True or not? So ये क्या है? Indus delta. What is this? GB delta, Ganga Brahmaputra delta. Is everyone okay? Are you able to visualize this? Western side pe higher hai, that is why river Ganga is flowing like this. Is everyone okay? And Brahmaputra and system are flowing like this. Water divide. Are you able to understand? This is not a north-south one. This is an east-west one. Is everyone okay? 4 deep को हमने fill up कर दिया. Has got filled up. 6 kilometers, almost 6 to 8 kilometers deep down. Can I say relatively undisturbed, continuous silting has happened? And with that, they have got filled up. Rivers in different stages. What are the different stages? वो मैं बता दूं. Let us go to the first map of the class today. Starting में जो doubts लिए थे, इधर ही गया. कहीं तो कुछ बनाया था यार, erase कर दिया क्या मैंने? Sorry, I made such beautiful Himalayas, colorful Himalayas. There one. ये तो है. Everyone. So 3 ranges of Himalayas are there. Rivers are coming up. So rivers first deposited the coarser sediments. Why the coarser sediments, everyone? Why would they deposit the coarse sediment? So coarse are heavy, difficult to transport. So what will happen? River will deposit them. उनको पहले छोड़ेगा. True or not? So everyone, please pay attention. Please pay attention on the screen. Don't drop. PC, PC, PC. Nothing to do with Priyanka Chopra. I'm calling it pediment cone.
Piedmont, cone. Piedmont means at the foot of the mountain. Cone is cone or fan. It is like this. ऐसा होगा ना, sediments will ऐसे conical shape में that's getting collected. With time, what will happen? These cones, they will overlap with each other, and soon the gap will be filled up. Will we get a near continuous belt of these boulders? Big boulders, big cobbles, pebbles, rounded stones. Have you seen hilly area somewhere? Have you seen such big rounded white colored stone, grey colored stone? People do some painting and drawing also. कुछ लोगों की आपकी hobby भी होगी ऐसी. This is the first belt immediately after our Shivaliks. Do we get that? This belt is called the Bhabur belt. Okay. In this, river is lost. The river vanishes. Why does the river vanish? Can anyone say? Is the river vanishing? Is it a magical thing? Is God doing something in this? No, sir, nothing magical. The stones are there. The river is there, but वो दिख नहीं रही. पत्थर के नीचे, flowing beneath. Very good, Chaudhary. Whosoever is there, everyone can. River goes under pebbles. So अंकित pebble पता है वो छोटे-छोटे होते हैं. Let's call them boulder. Boulder सबसे बड़ा होता है ना? बड़े-बड़े boulders में नीचे छुप गया. Now when the boulders are gone, now the river comes, and next is the Tarai belt. So finer sediments, but Tarai belt. Bhabur and Tarai belt. Belt number 2. Tarai belt. River deposits, fine sediments, less slope, poor drainage, water logging. पहले ये लिख लें. River will deposit finer sediments. The slope is less. The river has lost its slope. Remember, the slope was maximum when it was in the hills. Hills में river है तो उसके पास slope ही slope है. No problem. Yes or no? But as it reaches the plains, what happens? उसकी हालत खराब होने लगती है. True. So that will keep on happening. Now my question is, why is this area waterlogged? Why is this area waterlogged? जल्दी बता दो. Sanjit is saying fine particle. Sanjit अभी तो और भी fine होगा आगे there will be more fine. Naman is saying poor drainage. Naman, poor drainage is what my question is. Why poor drainage? Poor drainage means water logging. Poor drainage means water logging. Divyanshu says clay soil. Sorry Divyanshu, this is the time when the soil is still coarse only. Fine sediment नहीं है तो fine तो नहीं कहूँगा. It's my mistake. Everyone please correct this. Coarse sediments. अभी तो sandy है. अभी it is sandy. Fine तो बनेगा near the delta. Near the delta it will become fine. थोड़ा सा visualization लगाते. हाँ बिल्कुल सही राकेश, सही सोच रहे हो. Everyone please pay attention. A, B, C. Let's put some water at A. Will the water come at a faster speed V? When it reaches here, will the speed reduce to V? And here, will it have no tendency? Everywhere it can go any direction. What has happened? Loss of slope. When you were in the hills, you had something. Either Bhabur tak you had some slope, but Terai, what has happened? No slope. River is confused. Yes. Will there be a tendency of the water which was coming like this to pile up over here? Thoda pile up करेगा. It will spread out, and then finally the river will find a course. Slope के हिसाब से. And can I say the river will widen also? So यहाँ पर थोड़ा रुक के चलेगी कि नहीं? Will this area have water logging? What do I mean by poor drainage? Poor drainage means the flow of the water is not happening appropriately. This is why it happens. Is everyone okay? And are there sediments? Yes, sediments are there. Sediments are there. So these sediments and water, will it make a waterlogged area or not? पानी भी है, थोड़ा जल भराव का क्षेत्र है. हिंदी में शब्द है तराई. तराई means saturated. Yes or no? When you give water to your garden, तराई करते हैं आप. और भाबर में क्या है? भाबर में सिचुएशन क्या है? भाबर में the river is not visible. Yes or no? Is everyone okay? But I want to tell you the soil here is still sandy. It is coarse. I wrote it fine, my mistake. Because अभी तो बना है. इधर जब पिटाई होगी ना, in the main course it will become sandy. से क्या बनेगा? Muddy. After muddy, what will happen? Silty, clay. Towards the mouth, it will become clay.
जितना टूटेगा, the more the particles collide with each other, the more finer they become. So that will happen towards the delta. Delta will give us sticky clay. But if you're looking at water and sediments up the region, say Haridwar and all, you will not find sticky clay, you will find sand. Have you heard hill areas में illegal sand mining हो रही है from the river bed, stone mining? ये जो stones होते हैं इनको उठाकर ले जाते हैं. These are very important for the river bed, but they are doing that for construction material. They are using it. Yes or no? Construction material के लिए use कर रहे हैं. So that is what I want you to be able to see why this is happening. Is everyone okay? Tarai belt हो गया. Now, can I say 1 and 2? Everyone, can you see 1 and 2? Can I say these are two latitudinal belts, just like we had Himalayas latitudinal division? Can I say this is my latitudinal division of plains? Okay. Now these two rivers united. ये दोनों river मिल गए. This river and this river united, and now they are flowing like this. Correct? Every year, what happens? Flood comes. Every year, flood comes, and the water takes the sediments along with that. So after the flood is over, will the water come back? During flood, what happens? Overbank flow हो जाता है ना, river का overflow हो जाता है from its banks. Yes or no? River is carrying sediments. Will those sediments also go? Now when the flood is over, the water level falls. So what happens to the water? Water comes back into the river. Water comes back into the river. But these sediments stay back. What do they create? So North Indian plains are what? Flood plains. Yes, they are of two categories. They are of two categories. What are the two categories? Khadar, very close to the bank, and Bangar, which is away from the bank. Khadar, Bangar. Khadar, Bangar, Khadar. So 4 things we have to study when we are talking about plains of India, how they are created. They are created by aggradation. They are created by infilling. Infilling of what? Infilling of the 4D. And from Himalayas, first coarser ones come. The big boulders, they create the Bhabar belt. South of Bhabar is Tarai belt. South of Tarai is your floodplain. Floodplain can have 2 things, Khadar and Bangar. I will be talking about them. First of all, did we understand this? ऐसे बना. And rivers coming from Himalaya or from both the sides, Himalaya and Peninsula, whichever is there, they are bringing, and this is there. And this diagram is there. Everyone is this diagram anywhere in any book. Book में तो नहीं है, तो मैंने बनाया ना, अपने मन से बनाया. I want you to explain my students, so I created all my drawing. Some of you might be jealous also. Sachin sir has so many colors in his pen. मेरे pen में नहीं है. So you can be jealous. You can be jealous students. But I'm not bothered about that. I'm more interested about informed and educated students. Jealous is okay. Jealousy keeps on happening. That's like normal. खाना भूख लगती है, गुस्सा आता है, तो jealousy. You'll forget. Don't worry. Is everyone okay? Mountain ranges followed by plains and infilling. इतना clarity होना चाहिए, इसमें कोई doubt नहीं रह जाएगा. Crystal clear? If we read over and above this, when we are reading Fuller and Fuller says something else about this, that's an add-on. Can I say that information is an add-on? Take it as an add-on. The base of the pizza is ready. The broad understanding is ready. And if the question comes on latitudinal division, this is the answer. Can I say these are the latitudinal belts of the plain? Latitudinal belts of the plains of India. Everyone clear? Then I'll go into regional parts also. Bhabar to Bhabar. Bhabar and Tarai are more visible in Western Himalaya. Is that also okay? Wider. East में क्या हो गया? Bhabar and Tarai, they have got squeezed up because of compression, and they are narrow. And उनको हम क्या बोलते हैं? Duars. That whole belt which has got compressed, that entry point at the foot of Eastern Himalayas, those are called Duars. Is everyone clear with the word Duar? Duar क्या होता है? Make sense? Everything makes sense? कि खादर बांगर में क्या डिफरेंस है, जल्दी से बताओ. What is the difference between this खादर and बांगर? Sorry to interrupt, but I am new to this preparation with geography. Often come to know about you from my friend. तुम्हारा तो कमेंट के ऊपर चला गया. खादर is new alluvium, old alluvium. तो कैसा होता है ये new और old कैसे हो जाता है, ये मैं पूछना चाहता हूँ. Is there enough time for me to complete the geography optional for CSE? I got the subscription. Yes, Prashant, you have more than enough time. Today is the 8th lecture of this course. Please go and watch the first lecture. पहला lecture इस course का जाइए, देखिए. It will tell you how to integrate, and you have more than enough time. ठीक है? That's the answer for Prashant. Bangar above floodplain. अच्छा, Bangar above floodplain. Khadar replenishes frequently. Neeraj clay. Khadar this. Shifting of sediments. कितना डराते हो यार तुम लोग मुझे. अच्छा चलिए. I'm going to Khadar and Bangar. I'm going to explain. I want to ask you why Tarai is called the malarial belt. Why Tarai is called the malarial belt? So because of water logging, mostly humid conditions. Humid conditions है तो humid conditions, and it is in the tropical belt. Tropical area makes it what? Warm and humid. मच्छर को क्या चाहिए? मच्छर को क्या चाहिए? मच्छर is not looking for halwa puri. Yes, machar is looking for warm and humid, best conditions. Not only mosquitoes. Mosquito is a vector, so many vector-borne diseases can happen. Malaria, filaria. Have you heard of brain fever? Japanese encephalitis उत्तर प्रदेश के तराई बेल्ट में होता है. Yes, बहुत लोग मरते हैं. पॉलिटिशियन कहता कोई नहीं मरा, कोई मरता ही नहीं हमारे यहाँ. Yes, Japanese encephalitis या brain fever,
ब्रेन फीवर कहा जाता है, ये पीलीभीत एरिया में खूब एरिया होता है, बिल्कुल आकृति पीलीभीत, बिहार, दैट बाउंड्री रीजन, गाजीपुर रीजन खूब होगा, बहुत बच्चे मरेंगे और सरकार कहेगी कौन मरा, कैसे मरा, अब अपने कर्म में मर गया ये थोड़ी कि हम जिम्मेदार है। बट बिफोर इलेक्शन सडनली दे कम एंड दे लास्ट यूपी में काबा, बिहार में काबा, दे विल से ऑल बा, बट व्हेन पीपल डाई बा, दे से व्हाट बा, आई डोंट नो बा। आप देश के गद्दार हैं अगर आप बोलते हैं तो ये हमारे यहाँ मर रहे हैं, आप दुनिया में हमारी छवि खराब कर रहे हो। You know, to tell that our children are dying because of that, you are making fun of India, the world will laugh at us. अच्छा इसकी वजह से होगा, ठीक है। And if the world laughs, if the report comes, these people are chore, these are not laughing, they are making fun of us. अंदर से बोलोगे तो गद्दार हो, बाहर से बोलेगा तो गलत है, फिर सही क्या है? What is बा? सब चंगासी, सब चंगासी, चिल बा, सब्सक्रिप्शन बा, क्लास बा, एक्सप्लेनेशन बा, what else बा? अग्निवीर also बा. Yes, be happy. If any problem, Zuba Kesari ba, no price increase ba. या उसका गुटखा का भी प्राइस बढ़ा क्या? So in every their methodology is incompatible to India. Exactly सही है. Methodology is incompatible to India. Yes or no? See, one is you are a student A plus B whole square. You have mugged it up A square plus B square plus 2AB. ठीक है? There is another person who is not mugged it up. He does it this way is A plus B. वो multiply करता है A square plus AB plus AB plus B square. वो भी उसी आंसर पर आता है. So are the two different? Methodology 1, you mugged it up, and methodology 2, you open the bracket. नहीं वो उनकी रिपोर्ट की ना, methodology is wrong, it is not compatible with Indian methodology. What is Indian methodology? Indian methodology is A plus B whole square is equal to A square plus B square और free में मिलता है 2AB. 2AB comes free of it. और you know India को free पसंद है, ये सेल में मिला हमें. This is the methodology that we are using. That actually A plus B square free 2AB. This is what we are using. We don't actually call it this is a third methodology. ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये मैं नहीं बताता. स्नेहा बोलती हैं we don't believe in any negative global data. No, domestic data also global क्या है? Domestic भी होगा तो वो भी गलत है. ठीक है. आप अगर बोलोगे कि अभी एग्जाम में पेपर लीक हो गया या मुझे मौका नहीं मिला एग्जाम का, दिस इज नॉट फेयर, तो गलत है ना. देश सेवा करनी है तो ये सब तो करना होगा स्नेहा आपको. हम इसमें A plus B whole square में क्यों चलेगा? इसलिए चलेगा because I remember many people are afraid of physics. 11th and 12th, no? When you reach 11th and 12th, students who did not take science as an option, science in 11th and 12th, I think your innocence is still alive. Get that? If you did not opt for science, I think the human in you, the innocent child in you is still alive. People who foolishly took science, उनके जीवन में P भी आया, C भी आया, B भी आया, M भी आया, सब आया. Yes, sir? This is, like suicidal. Your life was lost after that. Sab chala gaya. And not that you understood. Then you got into that stupid race called IIT, PMT, and all that. What you lost in that? You lost your friends, you lost your dil ka chain, man ka prem, sab chala gaya. Emotional damage ho gaya. और आपको सिर्फ एक ही चीज याद है, formula. Only formula. Get that? And I want to tell you, some of us were lucky. I was very lucky. I got a very good teacher for physics. ऐसा कभी लगा ही नहीं कि physics is difficult. Personally, I never liked physics. But with that teacher, he made it so amazing. What's it? Listen, chemistry teacher was equally lost like I was lost. So when we looked at each other, we smiled at each other. I said, "Ma'am is equally innocent. उनकी भी हालत वही है जो मेरी हालत है. बेचारी मजबूरी में पढ़ा रही है." Yes, sir. So I had all sympathies for her. True, I had all sympathies for her. But ये maths वाला dangerous था यार. My maths was good. इसने बहुत अटेम्प्ट मारे यार, सारे मैथ्स को उड़ा दिया इसने. He said, the probability of whether it will be a red ball or a green ball, और इतना घुमाया मुझे, इतना घुमाया मैथ्स में इसने, that I decided one thing, that I know a lot of maths, I am good at maths. If a question comes on red ball or blue ball, I'll write बाहर में गई ball, I'll leave it, no problem. मैं चिल जाता था मैथ्स में, I know a lot of maths. That fellow said, no, you don't know probability. मैं तुम्हें नया बताता हूँ, conditional probability. Whether it will be the dice when you throw, what is the probability of number 6 coming? बोला छोड़ दे probability, मुझे करनी नहीं. I was always happy. तो देखो नीरज इंप्रेस करने के लिए कह रहा बेस थ्योरम ले खुश हो जा. याद है नीरज, अभी तुम खुलने पढ़ते हो तुम्हारे होश उड़ जाते हैं, इसीलिए ये सब बेस थ्योरम पढ़ा था. मैंने पढ़ा ही नहीं, मैंने कहा बे है ना, कीप इट एट बे. I know maths, I know a lot of maths, I know maths enough to score very well. मैं probability नहीं करूँ. अब सर्वाइव करना था ना. yes or no? Many of you survived chemistry. यार ये physical chemistry समझ नहीं आ रही, इसको छोड़ दे, organic से पास हो जाऊंगा. True or not? Degree manage or not? Only science student has to do it. All of you, some of you, did your friends go to commerce? Were you jealous or not? भाई जिंदगी तो यही जी रहा है यार, ये मजे में यार. And they were your friends till 9th and 10th. अब देखो इसकी लाइफ चिल चल रही.
अच्छा गैंग है, गैंग और भी इंप्रूव हो गया, अपना क्या अपना सब सट चुका है, ट्रू और नॉट? सो आई वांट टू टेल यू, it is not that geography is tough or easy. It is not that geography is lengthy or small. I believe if I am able to do what my physics teacher was able to do to me, that with him it never felt that physics is difficult. It was always there. I know I have the tools. That is what I intend to do with geography. Geography should not look difficult. Geography, you should have the equipments to make it happen for you. It is interesting, no doubt it is interesting, but I want everyone who uses geography उससे उसे मार्क्स मिलने चाहिए. तो उसके लिए क्या लगेगा? प्ले विद ज्योग्राफी, थोड़ा सा बी विद ज्योग्राफी बिल्कुल आएगा. और जहां पर ज्योग्राफी बहुत ज्यादा ज्योग्राफी हो रहा है, हाथ जोड़ दो यार, वेरी गुड, ताली बजा दो. यू नो समटाइम्स नो, you know in films no, sometimes they ask question, the person who said the question only he knows the answer, nobody else on this planet knows the answer. So when that question come, what do you do? वाह वाह वाह, ताज कितना सुंदर बनाया, ठीक है, इज्जत दे दो, क्या टेंशन है यार. A good batsman, what does he do? Good ball, you respect it. Every time थोड़ी बुमराह की तरह तुम 34 रन मारोगे, कभी कभी रिस्पेक्ट कर दो यार. And I want to tell you, especially people who are science background, what science has done to you, what science has done to you, I don't even want to tell you where it pains. Geography is nothing compared to that. ठीक है, जितना डैमेज साइंस तुम्हारे जीवन में कर चुका है. नो नो सर, आई लव साइंस एंड ऑल दैट. आई नो, आई आल्सो लव साइंस, फिर भी इट पेन्स. यस नो, इफ यू आर स्टिल ट्राइंग टू फाइट विद मी, आज ज्योग्राफी छोड़ के केमिस्ट्री ऑप्शनल ले लो, फिर देखता हूं कौन कितना उखाड़ पाएगा. ठीक है, थोड़ा सा ले लो, फिजिक्स ले लो, पता चलेगा कितना होता है टॉर्क, कहां कहां पे लगता है टॉर्क. यस नो, संयम सेज जीई की कोचिंग वाज पेनफुल, पेनफुल भी, और ये भी नहीं पता फ्रूटफुल और नॉट. ज्योग्राफी में दुनिया तो समझ आ रही है. सो ऑल पीपल हु फील ज्योग्राफी इज टफ, ट्राई फिजिक्स. यस, ट्राई केमिस्ट्री. सर आई वाज ऑलवेज ह्यूमैनिटीज सर. हाँ आई नो, ये तो तुम्हारे साथ मुश्किल हो रहा है डायग्राम बनाना. ह्यूमैनिटीज में कुछ तो कर रहा होगा, या सिर्फ एग्जाम के पहले कुंजी पढ़ रहा था. इज एवरीवन ओके? चलो थोड़ा सा साइंस लगाते हैं, थोड़ा सा साइंस लगाते हैं. मोमेंट ऐसे इस ना साइंस, तो आधे लोग ना घबराने लगते हैं. ओ माय गॉड, ही इज गोइंग टू टॉक अबाउट साइंस. सो दैट्स व्हाई आई क्रिएटेड सम ग्राउंड फॉर दैट. अब देखो ये वाले में, बिकॉज़ आई हैव यूज्ड ब्लैक बैकग्राउंड, आई डोंट हैव अ ब्लैक पेन. ऑरेंज से करेंगे. रिवर इज फ्लोइंग. आई से सिविल इंजीनियरिंग डोंट टेक सिविल ऑप्शनल. अरे मैकेनिकल की भी यही कहानी है यार. तुम तो ऐसे कह रहे हो सिविल वाला सिविल नहीं लेगा, मैकेनिकल वाला कौन सा स्पेशल है, उसको आज तक थोड़ी समझ में आया. ही इज नेवर अंडरस्टूड व्हाट इज द वर्किंग ऑफ अ पंप. ही डजंट नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट एंड अ सेंट्रीफ्यूगल पंप. और ऊपर से मैकेनिकल में तो यार कोई बैचमेट में लड़की भी नहीं थी, और दर्द था. कम से कम कुछ तो अच्छा लगता. The sex ratio of mechanical engineering is one of the worst sex ratios. I think girls are more smarter. उन्हें पता है मैकेनिकल तो कभी करना ही नहीं है, सारे मैकेनिक यही बैठ के बन ले, हम लोग क्यों बने. That way I think girls are smarter. सिविल में भी नहीं बताया. हाँ भाई, सिविल कंस्ट्रक्शन मजदूरी वाले सारे काम है, लड़कियों ने कहा भाई तुम लोग कर लो, तुम्हें करना कर लो. और तुमने सिविल क्यों लिया? अरे सर आईटी में सिविल ही मिल रहा था सर, एक इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल था एंड एक सिविल था, दीज वर द थिंग्स अवेलेबल, आई डिडंट नो एनीथिंग, तो इसलिए मैंने कर लिया. आईटी का स्टैंप चाहिए था, मिल गया, मिल गया. अब स्टैंप कहाँ कहाँ लगा हुआ है, घूम लो उसके साथ, आगे ना फिर यूपीएससी की तैयारी. आईआईटी करना था. ऐसे इंजीनियर साले करे सर पूरा मतलब जान ले रहे हो, पहले दुख रहा है, ऊपर से मजाक हो रहा है. कल्याणी कैसे सिविल में होती है, कल्याणी का मतलब कमिंग फ्रॉम अ गर्ल वी डोंट एग्री. बॉयज से पूछो उनका दर्द. कंप्यूटर साइंस कितना मन था उनका कि कभी कंप्यूटर में भी जाता, दोस्त भी नहीं बनाते कंप्यूटर वाले तो. एवरीवन कैन वी कम बैक. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंजीनियरिंग. कुछ लोग कैसे खुश हो गए सचिन सर पढ़ा नहीं रहे. हाँ कल्याणी का, आई नो यू आर फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग, दैट इज व्हाई आई सेड दैट. आई अंडरस्टैंड कल्याणी का, एंड थैंक यू फॉर ऑप्टिंग फॉर सिविल इंजीनियरिंग. एटलीस्ट दैट माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी ऑफ फीमेल्स वर रिप्रेजेंटेड बाय यू, है ना. हम बहुत खुश है कि जहां भी आपने पढ़ा माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी में होती. Okay, everyone. What has happened in this process? Can you see this? There was a plateau. There was a plateau. And what has the river done to it? What has the river done to it? Eroded. And can you see it has eroded vertically? इसको क्या बोलते हैं? Down cutting. अब V shape तो मैंने नहीं बनाया, कुछ U भी लग रहा है. Whatever is there, Gorge Canyon. कपिल ऐसे मुझे डरा रहा है. Ridge Basin System. जो करना है ठीक है कपिल, मैंने मान लिया. Ridge Basin System. I'm okay. If you have these words, very good. Some people are saying gorges, some people are saying valley, some people are saying canyon. जो मर्जी लिख दो. I have a word, down cutting हो रहा. Is everyone okay? Beginners को ध्यान में रखते हो. I do all this keeping in mind there might be beginners. Now let us come to a land. A 4 deep was filled up. Everyone, the 4 deep was filled up. Yes or no? This is a 4 deep and it has got filled up. So a river is flowing through it. A river is flowing through it. Can I say the river would have down cutted the 4 deep? Is everyone okay?
Does flood come? Does flood come every year? Yes, sir, flood comes. Do the sediments go over there? Oh, yes, sir, they go over there. So can I say this is floodplain? Is everyone okay? Now I want to tell you that with time, the river will cut further. River will cut further. And a time might come that the river is now flowing in this area only. Now the river is flowing in this area. And I want to tell you, river has deposited its sediments here. So the original course of the river is now no longer there. River narrow ho gayi. Why has the river become narrow, everyone? Because of its down cutting, no? So now the river valley is like this. And the river flows through this. So this is the valley and the river floods. No doubt about that, river floods even till today. But when it floods, the sediments are reaching only this area. Do you get that? And that area, can I say that area has become actually an elevated area? This area is higher area. Yes or no? And when the flood comes, now the sediments don't reach here. Is everyone with me? Can you visualize this? This has become a higher region. So river is flowing within its own floodplain or narrow center में flow कर रही. Can you see A and B on both sides of the river? Which one is getting flooded every year, A or B? So A is getting flooded every year. Formerly, was B getting flooded every year or not? Is B also a floodplain? A also floodplain? A has guarantee that every year flood will come. A is called Khadar. B is called Bangar. Since every year annually flood is coming, can I say annual recharge is happening? Can I say new alluvium? Can I say more nutrient? NPK, they get recharged. True or not? Khadar. Bangar not flooded normally. Can I say rare flood? What do I mean by rare flood? Sometimes the flood water, see, every time Ganga low-lying areas, every monsoon, the administration in Uttar Pradesh and Bihar gives the warning that, now the water is going to go up. People in the low-lying area, please come up. Unka evacuation kara dete. Do they get the evacuation done? But last year, 2021, did you hear Patna got flooded? Patna got flooded. Bihar mein kaba flood ba? Yes or no? Have people in Bihar forgotten that flood? Have they forgotten or not? Totally. Have they forgotten that flood or not? They've totally forgotten that. No, sir, they remember that. Well, when the election comes, they will forget. Because election mein to they will vote on their jati, no? They will vote on their caste. Will they vote on development issue? Will they vote on flood? No. We will vote on our caste. We are smart people. So Bhangar is that area that does not get normal flood. So rare flood hoga. So can I say it has less nutrients? Can I say less moisture also? Moisture will also reduce. Everyone. Can I say the alluvium immediately close to the bank of the river is Khadar? Away from the bank of the river is Bangar. Is everyone okay? समझ में आ गया? Perfect. Acha, tell me one thing. Have you seen at the mouth of the tap in your house? Have you seen some white powdery deposition? Mouth of the municipality tap. Does there white powdery deposition happen? What is that? That is calcium. Water has dissolved calcium in that. When the water evaporates, calcium carbonate precipitates. Here, when the water evaporates, calcium carbonate precipitates. Have you read in NCERT that in the Bangar region you find Kankar? Yes or no? वहां पर लिखा होगा calcareous nodules. Science वाला want to commit suicide. Geography is so difficult. अरे nodules मतलब मोती, गोल गोल balls, calcium balls. Homeopathy खाया कभी? Homeopathy pills वैसा दिखता है. Why is it forming? Evaporation is happening, so salt is getting precipitated. सर वो गोली क्यों होता? Why is it circular only? Why not oval? अरे nodule इसीलिए तो लिखा all shapes होते हैं. Whatever you can imagine, whatever your fantasies are, वही वाली shape का है. Do we get that? Which land should cost more, Khadar or Bangar? Which land should cost more, Khadar or Bangar? Well, your answer is keeping farming in mind. Well, it depends. Why do you need the land? Yes or no? I want to tell you Delhi NCR around Yamuna River, especially this region, Noida, Mayur Vihar, these are all Bangar regions. Not good for agriculture. But then the housing bubble happened. NCR में घर चाहिए. So अब किसानों को दवा के मुआवजा मिला, दवा के पैसा मिला, कोई टेंशन नहीं. Yes or no? As an agricultural land, it was not that great.
बट बिल्डर्स को पैसा देने में क्या दिक्कत है? Everyone, if this river has it, तो इसके पड़ोस में जो रिवर होगी उसका भी होगा. Will another river have such a system of Khadar and Bangar or not? Will it have its Khadar? Will it have its Bangar? So can I say Bangar will be the elevated region, higher region between two rivers? Yes, elevated region between two rivers. इसको क्या बोलते हैं? दो rivers हैं. There is this river flowing and this river flowing. Two rivers are flowing. One river, two rivers. And in between this sedimentary, can I say this is like a divide between the two rivers? ठीक है, इनके लिए वर्ड होता है bluff और interfluve. So but I read Doab. You read Doab. I know even a GS fellow reads Doab only. No, you are a geography optional student. Technical नाम भी तो पता होना चाहिए. You should know the technical name also. No, when the word bluff will come, you will be lost. अरे, what is bluff? Bluff, interfluve. River is flow. In between flow is interfluve. So my job to give you that. No, so please don't be afraid. My job, keeping an exam in mind, I want my students to play with these words. अच्छा, वहाँ पे interfluve होगा, बिल्कुल वहाँ पे interfluve होगा. Do you get that? But you read that the land between two rivers is called Doab, तो बिल्कुल सही पढ़ा है आपने, वो भी ठीक है. Is everyone okay? Khadar Bangar clear? Bhabar Tarai clear? Everyone, are we clear? Plains में कुछ छोड़ना नहीं. Gujarat plain, how were they created? Infilling which rivers? Banas, Sabarmati, Mahi, low-lying area. The two gulfs were connected. उसमें से पानी आ गया. Marine transgression area भी है. Marine transgression area is also there. So marine sediments are also there. Salt is also there. Gujarat, I want to tell you, produces a lot of limestone. Limestone में cement बनता है. Cement factories are there in Gujarat. Cement industry. Makes sense? Logic. I'm just connecting. Sir, watershed and bluff the same? Not necessary. Actually, strictly speaking, तो watershed is a much bigger unit. Bluff तो छोटी सी unit है. Watershed तो पूरे एक river जहाँ से अपना water play करती है वो. Bluff and interflow are generally with respect to two rivers. Yeah, that it's a very micro unit. Bluff. Is everyone okay? चलिए, ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया. आगे बढ़ते हैं. A will be elevated Khadar. A will be elevated Khadar. क्यों भाई? A तो खादर ही है ना. Elevate क्यों कर रहा है उसे? नीरज को कुछ ना कुछ complicate करना होता है. अभी हमने देखा low lying alluvium is A. उसको जबरदस्ती elevated खादर कर रहा है. और कुछ करते? नीरज, anything else? Sir, A consumed alcohol, उड़ता पंजाब वाला, and then A became elevated खादर. अभी बताइए इतनी मेहनत करके. River cuts down and the तो खैर नीरज के ट्रैप में मैंने फंसने वाला हूँ. नीरज मुझे कभी भी ट्रैप करता है क्लास में. आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट. प्लेन्स एक्सटेंड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. ये तो सभी जानते हैं, है ना? ऐसा मैंने बना दिया था आप लोगों के लिए. अराउंड 3200 किलोमीटर फ्रॉम द डेल्टा ऑफ इंडस टू द डेल्टा ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र. कितना है? 3200 किलोमीटर. इज एवरीवन ओके? दैट्स द विड्थ. और वो मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ पर वाइड है 500 या समथिंग, यू नो, व्हाटएवर वी हैड रिटन. सो दोस वैल्यूज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. रीजनल डिविजन्स पे बात करेंगे. लेट अस रीड आल्सो. सम ऑफ यू आर लाइक वंडरिंग कहां से पढ़े. Between Himalayas and the Great Indian Plateau, the plain extends from the arid and semi-arid areas of Rajasthan in the west to Brahmaputra Valley. The area is 7 lakh square kilometer. कुछ लोगों को यही इंपॉर्टेंट है भाई, मेरा प्रीलिम्स पास हो जाएगा, 7 याद करना है, 7 याद करना है. इट्स ओके. आई टोल्ड यू ना, लंबा है यहाँ पर. यस, 3200 किलोमीटर. यहाँ गुजरात से, यहाँ राजस्थान से चलेंगे, बल्कि इस डेल्टा से चलेंगे, डेल्टा टू डेल्टा. यस, 3200 किलोमीटर है. ह्यूज एरिया. और अगर मुझसे पूछो ना, इफ यू आस्क मी, आई वुड से दैट रादर देन 7 lakh square kilometer, no, generally it doesn't make sense, you know, such absolute data. Na, always remember, if you're preparing for mains, don't get caught in 7 lakh square kilometer. Let me give you better data. 20% of India's total land, approximately 1/5, is the plains. Make sense? Much better or not? That's easy. Do we get that? These plains are made up of soil brought down and deposited by rivers flowing from Himalaya and the plateau. Rivers are depositing millions of years. Sediments 2 to 3 kilometers. I said some places 6 kilometers deep, no? 4 deep की जो depth है. Remember that. Apart from that, we have coastal plain also. Coastal plain के अलग-अलग नाम है, काठियावाड़, कोंकण. So we'll talk about later. पहले हम किसकी बात करें? Indus, Ganga, Brahmaputra plain. ठीक है? A significant lithospheric flexure developed on the foothill of the south of rising Himalayas, leading to the deposition of Cenozoic Shivalik in a foreland basin filled with quaternary sediments of Great Himalayas. When we read this from the book, no, then immediately our mind says, कुछ समझ नहीं आया, फिर से पढ़. Then we read again. The significant lithospheric flexure developed on the foothills of क्या है? The significant lithospheric flexure depends on foothills of south. एक मिनट. Significant lithospheric flexure. समझ ही नहीं आ रहा. True. So what we do is delete. Something develops on the foothill or south of Himalayas, leading to deposition of delete Shivaliks in the foreland basin. Is it okay? So people who are
ऑलवेज वरीड अबाउट वोकैबुलरी, समथिंग डेवलप्स ऑन द फुटहिल, क्लास में बता दिया, प्लेन की बात कर रहा हूँ ये सुनो, कब बने, सीनोजोइक एंड क्वाटरनरी सेडिमेंट, ठीक है यार, इसके बिना भी इज द स्टेटमेंट कंप्लीट और नॉट? So this is what books do to us. This is why we lose our confidence. Write in your own word. A significant plain is created at the foothills of Himalayas, and that plain, because of it, it has been created because of the infilling of the 4D, and already a part of it has folded to form Sivalix. The vast spread of undulating sedimentary terrain, मतलब पूरी जान निकल जाएगी भाई साहब ये क्या है undulating sedimentary terrain. Undulating क्या था? Sediment क्या है? Sedimentary से बना, terrain means surface. Extends from Indus in the west to Brahmaputra in the east, Ganga Jamuna plains in between two formed in the 4D, which was created by the rising Himalaya, and complete draining of the Tethys in the Cenozoic. Do you understand? Books ये काम कर रही हैं. Why are the books doing this? Well, author खाली बैठा है, author को जियोलॉजी भी साधनी है, and the book is written for university. Yes or no? Remember university में तुमने कितना पढ़ा? तो उसको दिखाना बहुत है. True. कुमार कह रहे कवि की कल्पना नहीं है, सिर्फ लैंग्वेज है. इट इज एब्सोल्युटली ट्रू, व्हाटएवर इज रिटन इज एब्सोल्युटली करेक्ट. आप समझ नहीं पाओगे. सो बिफोर एक्सपोजिंग यू टू दिस हिरोशिमा नागासाकी न्यूक्लियर बॉम्ब्स, डिड आई एक्सप्लेन यू एवरीथिंग? कैन यू यूज माय क्लासेस एंड देन गो टू द बुक विद एलान? अगर कुछ ऐसा टफ है बोलो भाड़ में गया, पढ़ ले यार जो भी है. रिमेंबर इट्स लाइक प्रोबेबिलिटी नहीं करना, मुझे तो पता है व्हाट इज इट. द 4D वाज फिल्ड बाय सेडिमेंट्स डिराइव्ड प्राइमरीली फ्रॉम हिमालयस की जगह पता क्या कह रहा है? डिराइव्ड प्राइमरीली फ्रॉम टेक्टोनिकली एक्टिव हिमालयस. लुक्स गुड, अच्छा लगा. तो ये क्या है? इन इंग्लिश वी कॉल दिस एज एडजेक्टिव. हर चीज पे आप देखोगे ही यूजेस एडजेक्टिव, हर चीज पर ही यूजेस एडजेक्टिव. सिवालिक्स को क्या बोलता है? सीनोजोइक सिवालिक्स. सेडिमेंट्स को क्या बोलता है? क्वाटरनरी सेडिमेंट्स. डू वी गेट दैट? सर, इज द एग्जाम डिमांडिंग these terms in our answer? Ram, in certain areas we should, not every sentence, but कुछ जैसे टेक्टोनिकली एक्टिव इज इजी, नो, पिक इट अप. 4D was filled by the sediments derived primarily from tectonically active Himalayas in the north and partly from the stable Archean massif. अबे प्लेटू तो कहना चाह रहा है स्टेबल आर्कियन मैसिव एंड प्रोटेरोजोइक प्लेटफॉर्म्स ऑन नॉर्थ. ये एक्चुअली पूरे फ्रेज का मतलब क्या है? पेनिनसुलर प्लेटू. मर्जी. Ram, we call this as a flowery language. बड़ा चढ़ा के कहना. True or not? So we don't need that flowery language, but some use of jargon, and you would see when I speak, I generally give you some jargon. The width of IGP varies. On the western side it is wider, 300 किलोमीटर बोला था, ईस्टर्न साइड में कम है. The Holocene gravel and the sand apron, देखो कितना सुंदर है. बाबर को क्या बोल रहा है? एप्रन बोल रहा है. गले में एप्रन पहनते हैं, मतलब देखो एप्रन, कितनी खुशी, मतलब आंसू बह गए थे जब मैंने पढ़ा है. देखो व्हाई मी, मेरे बच्चे भी पढ़ने चाहिए. And I want to tell you, in Delhi, some coaching teachers take this on their laptop, read it from there and dictate it in the class. And student write. अपने apron, अपने सूट, पैंट, शर्ट सब उतर जाएगा, but he will write. And he says, sir, कितना सही बताया. And moment something we don't understand, immediately we say the fellow speaking must be intelligent. वो teacher intelligent हो जाता है. And पूरे नाटकीय अंदाज में you will find some teachers in Delhi have made geography so difficult, and that is why many people actually in last 2-3 years left geography, because they found that geography was dictated to them in this language. बोले इसी से पास होगा, देखो मेरा टॉपर. अरे सुनो, पिछले 5 साल से ऑलमोस्ट ऑल टॉपर्स हैव बीन एसोसिएटेड विद मास्टर स्ट्रोक. वो जहां से भी पढ़ के आए, व्हेन दे केम, मास्टर स्ट्रोक वाज मोर लाइक नशा मुक्ति केंद्र फॉर देम, रिहैब. दे एक्चुअली गिव अप ऑल दिस. अरे ये फालतू की चीज रट भी नहीं सकते, कांट इवन मेमोराइज. हाउ लॉन्ग विल यू मेमोराइज सैंड एप्रन, होलोसीन ग्रेवल एंड सैंड एप्रन? अभी मैंने आपको बोला था ना, वहां पर क्या बना था, ऐसे बनाया था ना, मैंने कहा था पीडमोंट कोन, मैंने भी यूज किया. मैंने क्या बोला? पीडमोंट कोन. डिड आई यूज दिस वर्ड? वो क्या बोला? होलोसीन ग्रेवल सैंड एप्रन occupy the northern track up to the foothills of Shivalik. This region between Bhabur and the Pleistocene package lies in the river terrace. क्या बोला है पता नहीं यार. ठीक है, flood plain, channel and lake deposit. शुक्र है लेकुस्टरीन नहीं लिखा है. Why did I bring this to you? Because I believe my class is now ready to read Kuller, and Kuller will come with all these things. True? Are you okay with skipping certain things? फालतू वाली चीज हटा देंगे. Did you understand? ये भी तो होना चाहिए, टीचर को पता होना चाहिए क्या जेन्युइन है क्या नहीं. The Indus River alluvial plain gives way to southeast arid plain of West Rajasthan adjoining Sindh, the Thar Desert. He's simply saying alluvial के बाद, Indus के बाद desert आता है. Luni River developed in 650 to 300 kilometer stretch. बहुत से लोग ये भी याद करेंगे, अभी कभी याद नहीं रहेगा. टेक्टोनिक तो पता नहीं, wind action coupled with geotectonics in the fluvial regime has given rise to anomalous drainage pattern and the formation of saline lakes, playa, Didwana. और यहाँ पे पता क्या करवाएगा? दिल्ली का टीचर इस पर PhD करवाता है. And if you tell the student you don't need this PhD, so he goes to the teacher, sir, वो टीचर कह रहे थे you need PhD, उसको आता नहीं होगा इसलिए मैं करवाता हूँ. How many lectures? 5000 लेक्चर मैं करवाऊंगा ज्योग्राफी. After 5000 lectures, this student impregnated with 500 tons of notes. सर ने कोई कमी नहीं छोड़ी, कमी मुझ में ही थी.
सबके पास 26 होते क्रोमोसोम, 26 होते हमारे, कितने होते क्रोमोसोम, कितने होते ह्यूमन क्रोमोसोम्स, 23, सॉरी 23 क्रोमोसोम, मेरे 22 एंड हाफ निकले। सर की कोई कमी नहीं थी, सर तो एक्चुअली हैज 23 एंड हाफ क्रोमोसोम्स। हाँ, पेयर की मैं बात कर रहा हूँ। Sir gave us so much notes. Actually, I could see sir has 23 and a half chromosomes, and I realized that I am different. I have 23 pairs. हाँ, वो 46 वाले मैं समझ रहा हूँ. But I want to tell you, the fact is, both sir and the student have only 23 pair. Because moment you increase or decrease, your species changes. बट वो टीचर इतना करवा के आपको बताना चाह रहा है वो ह्यूमन नहीं सुपर ह्यूमन है, क्योंकि उसको भगवान बनना है, उसको गुफा बनानी है। और आपको क्या पता करना है, व्हेन यू डू द क्लासेस यू डोंट रियलाइज दैट आई एम ह्यूमन, यू रियलाइज दैट ह्यूमन एंड डोंकीज आर प्रीटी क्लोज, आई थिंक आई एम ऑन द डोंकी साइड। अरे यू आर एब्सोल्युटली ओके, एवरीवन इज नॉर्मल, व्हेन यू फाइंड सच लैंग्वेज घबराने का नहीं, क्रॉस कर देना। यस सर। So that is why I am saying I have brought these samples to you so that you don't commit suicide, and I am there to tell you, इसलिए लेकर आया हूं। ये भी ले आया। फिर कई बार ये होता है कि सचिन सर ने डिक्टेट नहीं किया, हैंड रिटन मटेरियल तो थोड़ा बहुत है, बट मैं पढ़ूं क्या, ये लो पैसा वसूल लो। सम पीपल माइट से सर मैंने सब्सक्रिप्शन लिया, मटेरियल भी पढ़ना है मुझे, पढ़ ले। बंगाल बांग्लादेश फ्लूवियो डेल्टाइक प्लेन फ्रिंज ऑफ 30 मीटर हाई प्लीस्टोसीन टेरेसेस कंटेन रेडिश ब्राउन फेरुजिनस कॉन्ग्रेगेशन। सर ये क्या होता है, आयरन ऑक्साइड नोड्यूल्स। अच्छा, immediately sir, do we have to read it? No. So then why do you bring it? I brought it because there are many PDF collectors in the class. They will ask their friend. Somebody said, no sir, I joined geography, or I'm planning to join geography, my friend told me about you, you know. So what will happen, you will look at their notes, there you will find this language, then you will feel, oh my god, मुझे तो आता ही नहीं है। So I'm just telling you, अगर ये मिलता है तो घबराना नहीं। ऐश्वर्या टॉपर की रैंक लेकर पंजाबी ज्योग्राफी टीचर एड्स दे रहे हैं यूट्यूब पर। अरे वाह, बहुत बढ़िया। ऐश्वर्या वर्मा को पंजाबी टीचर ने भी पढ़ाया, बहुत बढ़िया है, गुड है। ऐश्वर्या कई बार तो ऐश्वर्या को नहीं पता होता कि उसको किस किस पढ़ा दिया है, ठीक है। व्हेन आई टॉक टू हिम वी आल्सो लाफ। एंड रिमेंबर, ऐश्वर्या का अगर आप इंटरव्यू देखोगे, ऐश्वर्या वेंट टू वन ऑफ दीस टीचर्स टेस्ट सीरीज, ओके, बिफोर मेंस। ऐश्वर्या हैज ऑलरेडी रिटन मेंस। आउट ऑफ द 19 क्वेश्चन ही सेड ओनली 4 क्वेश्चंस आई न्यू, व्हिच इज वेरी रेयर, होगा ही नहीं ऐसा। बिकॉज़ व्हाट द क्वेश्चन वुड बी, डू यू नो व्हाट, examine the ferruginous concretions of the Bengal Bangladesh formations in Indian plain. He says, I really lost my confidence. Immediately I threw that paper aside, I looked at PYQ, and then I said, okay, this is going to come. True or not? So unnecessarily impressing the student, unnecessarily giving them heavy stuff is good for these teachers' business. But I really feel at times there will be a big cost which the student as well as the optional has to pay, because then optional earns a bad name. Most of these teachers never went to a real university for post graduation. Get that? So somebody, you know, a fellow in Delhi, he teaches geography and he says, only I know these topics, nobody else knows. Till my coaching opened, nobody knew these topics, only I know it. So no, geography has been taught since Stone Ages, number one. If you go to universities, अब तो अगर जेएनयू में जाएंगे, and when you do, what is happening, जेएनयू भी और डी स्कूल वाला हमारा डीयू का भी एमए टॉप क्लास एमए है यार। No, you get professor जेएनयू में, when I was doing my masters in geography with the professor, you know the kind of knowledge they have, the coaching industry में कोई किसी के पास हो ही नहीं सकती। And there you do a lot of work. You know, we were being sent to Arunachal Pradesh to actually go and see those samples, what has happened in Himalayas, what are the sediments, what are those things, and we have to prepare a report. Imagine that is happening in GNU, and here a coaching institute fellow comes and says, I came, I opened the coaching, and then, you know, these things came. Before that, I was giving my exam, I was making my notes. और वो ऐसे ही notes बना रहा था, ये notes बना के बैठा था। अब बच्चों को इससे टॉर्चर कर रहा है, बोला ये नहीं पढ़ोगे तो फेल हो जाओ। So everyone, have I shown you बाबा का material also? ये गुफा वाला material है, but I do feel that, you know, everyone, this phrase is a good phrase. Extensive Piedmont belt, it's a good phrase. Bhabar, I know it is there. Yeah, that I like it. Monotonous flatness of Ganga plain is relieved by some bluffs, levees, oxbow lakes, and badlands. Very good, such a good idea. That Ganga plain is not flat. There are some bluffs here and there. There are some levees. So दो rivers के बीच का जो river का bank होता है ना, इसको levee बोलते हैं. This is called levee. So if you are a plain and if you have a bluff, so is this breaking the monotony or not? I really like this idea. This actually gives you a picture that our plain is not flat plain. It is gently rolling plain. I would like to take this language. Central Ganga, there are two distinct older alluvium and Bangar, and the newer alluvium Khadar. Yes, with Khadar and Babar show the different chronology of event. They are sandy, gravelly deposits, late Holocene. If you remember the geology, okay. Otherwise, you can cross it. Riverine in origin, occasionally form inland deltas and fan deposits. So, the inland delta क्या होता है? अरे यार एक बात बताओ ना बच्चे. पहले तो you must understand what is delta. Delta I read when I was in school. This was the symbol of delta. ऐसा था delta.
Mathematics, delta. Now a river comes and deposits its sediments like this. So हमने उसका नाम क्या रख दिया? River delta. Do you get that? Where the word delta comes from? Symbol delta from mathematics. Okay. Now I want to tell you, this happens where? Where does the river make a delta? In the ocean. In the ocean, these deltas are created. But when a river is emerging out of mountains, does it deposit its coarse sediments like this, which I was calling as cone of fan? Can I also call it as delta? So ये कौन सा delta हो जाएगा? Inland delta. Everyone, उसी को fan deposit भी बोल रहा है ना? बोल रहा है fan deposit. So why do they call it fan? Fan भी बता देता हूँ. Yes, आपने देखा चाइनीज मूवी में चाइनीज प्रिंसेस, उसके हाथ में एक फैन होता है, ऐसा वाला, वो रूप की रानी चोरों का राजा श्रीदेवी, ऐसा वाला फैन, ऐसे ही बनता है फैन, इसलिए फैन कहते हैं. आधे लोग तो फैन में एकदम से ये दीवार देखने लगते हैं, फैन तो ऐसा होता है, इसको फैन क्यों बोलता है? दिस इज दैट फैन ना, हाथ वाला फैन, बिल्कुल हवाई वाला फैन. So when these words come, inland delta, you know what? These Baba teachers, they will give short note on inland deltas and fan deposit. This will never come in the exam. But the problem is, in UPSC we can't say never no. Is it nonsense? Who told you it can never come? तुम्हें तैयार होके जाना, करके जाओ. अरे यार, if you know what is delta, वहाँ पे नहीं सोच लेगा inland delta क्या होता है? Can we do some transference of learning or not? So I know you're beginners, but that day when it is expected, can we do that? In Bengal, Bangladesh region, fluvio-deltoic plain. अरे delta का plain है ना, because river लेकर आए तो fluvio-deltoic बोल रहा है. Can you bring that? ये reddish brown हटा दो. These terraces are comparable to Barind in Madhopur in Assam and Bangladesh. नहीं चाहिए. Is everyone okay? Coastal plain. Indian subcontinent has more than 6,000 kilometer coastline from Indus to south tip, then Bengal delta, and then to the coast of Myanmar, Irrawaddy. Sri Lanka has a broad fringe of coastal plain along it. ये सबका है तो श्रीलंका का भी होगा, ठीक है? We can understand. The Makran coast, ये भी टेंशन है. Makran coast क्या है? ये पाकिस्तान का कोस्ट है. अरे देखो भाई, जब इंडिया का कोस्टल प्लेन होगा, everyone, if India has a coastal plain, will Pakistan also have a coastal plain? Will Sri Lanka also have a coastal plain? Will Myanmar also have a coastal plain? Myanmar का coastal plain क्या है? अराकान, ठीक है? पाकिस्तान का coastal plain क्या कर दिया इन लोगों ने? मकरान. श्रीलंका का भी coastal plain है. Why did they give it? To impress you? Yes or no? अच्छा, मकरान, अराकान, श्रीलंका, and the student is totally impressed. सर को पाकिस्तान का भी पता है, सर को म्यांमार का भी पता है, बुक में लिखा है, नाम है, माउंटेन के नाम से. ये है ईस्ट southeast of the Indus deltaic plain is run of Kutch, the salty marsh. तो यहाँ पर क्या है? कच्छ का प्लेन है. Remember, number 1 will be the plain of Kutch. We saw marine transgression happen, so this is marshy, salty. This is the coast of submergence. The coast of Gujarat is a prolongation of alluvial sediments from Sabarmati, Mahi. Remember those things has also come. Then comes the Konkan coast. Konkan coast is from Gujarat to Goa. That is also there. But there a lot of cliffs, bays and coves are there. Can I call this coast as dissected coast? Remember, dissected coastal plain. Why? Because many rivers are going and cutting through it. Simple. वही चीज है, but technical language में. Why am I showing you technical language today? Because when you read Khuller, you will come across this word. Will you lose confidence or will you be smart to see? यार ये तो बात कर रहा है. He is also talking. पहले ये वाला गुजरात का कोस्ट है. फिर this one is up to Goa, Konkan coast. Karnataka is called Kannada coast, and Kerala is called Malabar coast. This is called Coromandel coast, Coromandel, or Odisha में it is called Utkal coast. Is everyone okay? Coastal plains. How were they created? Well, the rivers were carrying sediments. They were created like that. So tomorrow we'll continue with this. I have a request. Homework. Read Peninsula, Himalaya, North Indian Plain. From where? खुले से पढ़ लेंगे. Sir, I don't know which edition, what will happen. अरे अपने ग्रुप पर, टेलीग्राम ग्रुप पर, go into the files, you'll get that. Sir, when will you take special mapping class? ले लेंगे भाई, ले लेंगे, don't worry. Mapping has to go with the whole course, no? Can I expect you to read Khuller? And read, do not study, skip, cross, unnecessary jargon. Can you do that? Extract meaningful jargon, which you can use, yes or no? Add to your notes. शुभम होगा सर, स्पीड बता दो पर पेज. शुभम एनसीईआरटी नहीं है ना बच्चे. If it was NCERT is flat road, 5 minutes per page. Here you will find many things has been thick over there. The road will uphill, up down, yes sir. But in general, I would say 5 to 7 minutes per page is okay. Is everyone okay? So if you are reading for 30 minutes, I expect you to complete 5 to 6 pages. कर लेंगे? So how much will be Peninsula? 5 to 6 pages ही होगा ना.
How much will be Himalayas? 5 to 6 pages. How much will be Indian plain? 5 to 6 pages. So can you give half-hour slots, 2 half-hour slots today and 2 half hours tomorrow? हो जाएगा 2 घंटे. Don't unnecessarily get stuck into it. I want you to have the confidence that this thick book also I've read it with my teacher. तो कोई डाउट होगा तो please ask me. Everyone, thank you. The class has again exceeded 10 minutes. I'm sorry. वो बीच में break भी देते हैं ना 7 minutes. I hope you are okay with that. So break की वजह से थोड़ा सा extend हो रहा है. I hope you are gaining your confidence and I'll meet you soon because we have to start our reverse also. अब drainage का time आ गया. 8 classes are enough. We have talked a lot of it. So tomorrow I'll quickly do the coastal plains and the islands and then we must get into the reverse. Get that? Thank you. Bye bye. Anything you missed, you can repeat. And people who joined us for the first time, make sure you watch the first lecture. Thank you. Bye bye.